Hello, hello, check. Hello, testing. Hello, check, check. Hello, hello, hello. Hello, check. Hello, testing, testing. Hello, hello, check. Assalamu alaikum. Good afternoon. It's day number 10, match number 16. Let me take you through the two teams. We got the Real Sultan Sumerbugh, Umar Alam, the captain Amir Sofi, Fazil Rashid, Hinan Malik, Nasir Ganai, and it just faded away. Toss won by Real Sultan Sumerbugh, and their captain opt to field first against the likes of Al Samad. That means Al Samad will be batting first this afternoon. It's bright sunshine, colorful flags, gentle breeze. It's time for action in the middle. Hot and humid atmosphere in the month of September. And it's 10th day of tournament. And we have 16th game underway. In a hurdle, the Real Sultan Sumerbugh. The team will be pumped up. Looking at the recent achievements across the valley, the Real Sultan is looking forward, in a good mood today, looking positive. And that's what they require to carry on and continue their campaign on a positive note, on a winning note. And can they continue their winning streak in today's match? Let's find it out. On the other side, Al Samad, they are in a must-win clash here. They need to win this one at any cost. They were in a hurdle. Now they are dispersed out. Team, the Real Sultan Sumerbugh. Looks like Umar Alam is going to open the attack again. As he's warming up, you can see that he's measuring that run-up. He's got a good run-up. And Umar Alam is in good form nowadays. Will he hit the right areas? There is Nasir Ganai in the lineup. Tajamul Baba, the sixer king. He's got most number of six in the tournament, 10 out of them. And on the other side, there is Fazil Rashid, Hinan Malik, Sajjad Ganai. Amir Sofi is also in their lineup. Al Samad got Hilal Colored there, who will walk alongside Hilal Colored. It's going to be Adil Guldan will join him. Colored and Guldan, the two openers for Al Samad Cricket Club. Yesterday what we saw here, that was a superb fight. A night to remember. Some of the cracking shots on display. And these are the two openers on your screen. You can see that. They're approaching the pitch. On the other side, Umar Alam is warming up. He's getting ready. Yes, Jeet, who bowled that quality over yesterday and captured their hopes alive and keeping the boat afloat as they advance to the next stage. Al Samad got the two openers in the middle now. Over number 1 is about to start. Umar Alam has got the ball in his hand. Nazir, once again, bright sunny day. And that's what we need. And that's what we're expecting. Our prayer is always there, that it should remain dry so that we can culminate this event in a wonderful manner. Your comments and your suggestions for both the teams. What they need to do under certain circumstances with the hot and humid atmosphere around the corner. अस्सलामु अलैकुम, हार्दिक स्वागत आप सभी व्यूवर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से। पहला मुकाबला दिन का और कुल मिलाकर 16वां मुकाबला अल समद क्रिकेट क्लब
वर्सेस द रियल सुल्तान समरबुग। हालांकि द रियल सुल्तान समरबुग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए अल समद की टीम को। और अवश्य यहाँ से जीत अर्जित करना दोनों टीमों के लिए, चाहे वो रियल सुल्तान समरबुग हो या फिर अल समद हो, एक कांटे की टक्कर का मुकाबला रहने वाला है। अच्छा खासा तापमान है और एक खूबसूरत विकेट है। हालांकि विकेट जो है यहाँ पे रनों की भरमार हमने पिछले लगातार मुकाबलों से देखी है, तो ऐसे में कोशिश होगी अल समद की, जब उन्हें न्योता दिया गया है, एक टारगेट सेट करें, एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करें 180 190 तक, क्योंकि इस विकेट पे वो लक्ष्य चेज होते हुए दिखाई दिए हैं पिछले मुकाबलों में, तो कोशिश जरूर होगी। चलिए देखते हैं, एक अच्छा मुकाबला, क्रिकेट की जीत यहाँ पे अवश्य देखने को मिले दिन के अंत में। एक बेहतर मुकाबला हो, बेहतर शुरुआत हो, एक चुनौतीपूर्वक परिस्थिति रहे दोनों टीमों के लिए, और वो बेहतर अपना 100% सभी खिलाड़ी, चाहे वो बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डर्स हो, वो दें, तो फिर परिणाम आपके हित में है। शुरुआत होने जा रही है इस मुकाबले की। अल समद क्रिकेट क्लब, हिलाल कलर्ड सामने लेट्स प्ले का निर्णय, और उमर आलम पहली गेंद लेकर के। अच्छी गेंद थी उमर आलम की, जिनके पास गति है और उस गति का बेहतर तरीके से प्रयोग करना होगा, एक सटीक लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी। उमर आलम के पास अच्छा खासा अनुभव है। सुल्तान वारियर समरबुग जो पिछला मुकाबला जीत करके आए हैं, और कहीं ना कहीं वह आत्मविश्वास से भरे सभी खिलाड़ी एक नई शुरुआत करेंगे इस मुकाबले में। जेके सुपर सीमेंट राइट प्रीमियर लीग सेकेंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। हिलाल कलर्ड और आदिल गुलडान को आज प्रारंभ में उतारा है इस मैच में। और उमर आलम ने शुरुआत की है गेंदबाजी में एक स्लिप के सहारे। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी। पढ़ने के बाद हल्का सा कोण बदला गेंद ने, पर सम्मान दिया ऐसे तैसे करके गेंद को वही पास में लुढ़काया बल्लेबाज ने। कलर्ड जो कि एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं, पर शुरुआत में एक आत्मविश्वास, एक संयम दिखाना होगा, क्योंकि जल्दबाजी की आवश्यकता प्रारंभ में नहीं है, पर वो जो आपका स्वाभाविक खेल है आप वही खेल खेलिए। पर यहाँ थोड़ा सा आत्मविश्वास ज़रूरी है, थोड़ा सा विकेट को परखना ज़रूरी है, गेंदबाज को परखना शुरुआत में ज़रूरी। एक बार आप सही तरीके से गेंद को मिडल कर पाएँ तो फिर आप बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। कलर्ड सामने, एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, और यहाँ पर क्या कैच लपका गया है, और देखना होगा ये थर्ड अंपायर को रेफर किया गया अथवा नहीं। हालांकि एक जोरदार अपील थी कॉट बिहाइंड की, और अभी भी थोड़ा सा विलंब, पर जो शुरुआती ओवर्स काफ़ी महत्वपूर्ण, और लगातार हिलाल कलर्ड जो है वो प्रहार का प्रयास कर रहे थे, लगातार वो बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआत में ही एक दबाव बनाने का प्रयास उनका था। यहाँ देखना होगा कितना सफल हुए हैं। क्या या विकेट कीपर ने जो कैच लपका वो किनारा छू करके गेंद गई थी, ये देखने वाली बात हो गई। इस समय 0 बगैर नुकसान के खाता खोलना बाकी। अल समद क्रिकेट क्लब की टीम को आउट करार दिया गया है, तो पहला विकेट यहाँ पे, और अल समद क्रिकेट क्लब ने हिलाल कलर्ड को गंवाया है। शुरुआत में ही उमर आलम को यह सफलता मिलती हुई 0 पे पहला विकेट गंवाया है। He's gone for naught without scoring. That's a good catch. That's a good goal. It did carry, and look at the celebration. Fazil Rashid behind sticks, behind stumps, and he celebrated that catch that caught behind of the bowling of Umar Alam. Hilal Khaled is walking. It's a huge loss, early dent, big blow. Umar Alam is among the wickets. He chipped in with a wicket in the very first over. It's none for one. Al Samad yet to get underway, yet to open their account, and one of them is back to Hut. There comes number 3. It looks like Ishtiyaq Robi. Ishtiyaq Ilahi is in at number 3. He stride out to center. Of course, looks like that he was just trying to warm up a bit as he decided to walk out. He was jumping, he was skipping, and now he's getting ready to face the likes of Umar Alam. He's marking the fresh guard. Early below, 1 down. Big loss, huge one to go earlier on. Pressure will be on newcomer. To overcome pressure won't be easy. Can they recover after that early loss? Look, Weez again trying to open up his arms, bending his back a bit. It's none for one straight away. A terrific start for Real Sultan. Keeps it to mid on. There is no possibility of a run again. Yes, Jeet is there. What a name he's got.
The yes man is there at mid on. Already one down. Not looking for runs at the moment. Hilal misread completely in the very first over. Can't understand the surface. A good toss to win. With a slip in place. Opener the bat face. Finds man in place again. Not for runs. In a desperate need of a partnership. And meanwhile, the two batters, they need to open their account. One is yet to face a ball. The other one has used 2 balls. Is it going to be a wicket maiden from Umar Alam? Will he do that? Find it out. The last ball of his over. He has picked up 1 in this over. And now Robbie has decided to take him on. Over mid on into the fence for 4. And with that 4, Robbie is underway. He's off the mark. And so is Al Samad up and running here. It's 4 for 1 after the completion of over number 1. Unable to chip in with the Madden. Would have dreamed. However, Robbie takes him on and decided to put that one away over mid on into the fence. 4 for 1. 1 gone, successful over from experienced lad comes to an end. शुरुआत बेहतर उमर आलम द्वारा पहले ओवर में विकेट चटकाया अल समद क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज हिलाल कलर्ट का 4 रन अंतिम गेंद पर रॉबी के बल्ले से और पिछले मुकाबले में भी अच्छी पारी खेली थी इश्तियाक रॉबी ने। इस समय 4 पे 3 गेंदों से आदिल गुलडान को खाता खोलना बाकी। 4 पे 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरा ओवर पारीकार उमर आलम के साथ दूसरे छोर से साजिद डार का इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाजी में। एक बेहतरीन गेंदबाज और हाल फिलहाल के रिकॉर्ड की बात करें बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं साजिद डार जो शुरुआत करने जा रहे हैं इस मैच में द रियल सुल्तान समरबुक के लिए गेंदबाजी में। 1 के बाद 4 दूसरे ओवर की शुरुआत। अच्छी खासी धूप बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से ये लाइव आप तक पहुंच रहा है। 16वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का। साजिद डार नया ओवर लेकर के पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, विकेट कीपर से भी चूक हुई और वाइड का निर्णय वहां अंपायर का। तो 2 रन और खाते में, 2 अतिरिक्त रन और खाते में। 4 के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 6 1 विकेट पे। ये दूसरा ओवर जीके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 वर्ष दूसरा एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। इस 16वें मुकाबले में अल समद क्रिकेट क्लब और द रियल सुल्तान समरबुक की टीम आमने सामने। अच्छा मुकाबला, एक बेहतरीन और शानदार ये मुकाबला रहने वाला है क्योंकि अल समद की टीम पिछले मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में इस मुकाबले में देखना होगा द रियल सुल्तान समरबुक के सामने वो किस प्रकार का योगदान देते हैं बल्लेबाजी में और कितना बेहतर उनका योगदान रहता है। साजिद डार सही दिशा, लंबाई, नियंत्रण और एक योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। एक आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट उनके विरुद्ध खूबसूरती के साथ गैप में और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ। यह दूसरा चौका रॉबी के बल्ले से वे 8 पर पहुंच गए और इश्तियाक रॉबी एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं। खूबसूरती के साथ फील्डर वहां पर तैनात थे पर उनकी बाईं ओर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर। ये 4 रन और खाते में रॉबी की ये क्षमता है, बड़े आत्मविश्वास के साथ, एक पॉजिटिव माइंड के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे दोहरे अंकों में रन संख्या 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद साजिद डार एक स्लिप विकेट कीपर के अलावा इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे। थोड़ा गति में परिवर्तन किया जरूर था, धीमी गति की गेंद जरूर थी पर गेंद की पिच तक पहुंचना जरूरी। ठीक गेंद के पीछे आकर के स्ट्रोक लेने होंगे सामने सीधे बल्ले से। साजिद डार जो एक सही लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं यहाँ पे जरा से भी विड्थ मिली इश्तियाक रॉबी को तो गेंद सीमा रेखा से बाहर ही पहुंचाने में सक्षम हो गए। वो क्षमता हो इस बल्लेबाज की। एक बेहतरीन बुद्धिमानी क्रिकेटर सामने सीधे बल्ले से खेल करके चतुराई के साथ 1 रन दौड़ पड़े। दूसरे की मांग
और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन, कमाल का उनका फिटनेस लेवल। 12 एक विकेट पे 1.3 ओवर की गेंदबाजी, दूसरा ओवर। अल समद क्रिकेट क्लब टॉस हारे, न्योता दिया गया बल्लेबाजी के लिए रियल सुल्तान समरबुग द्वारा आमंत्रित किया। हिलाल कलर्ड और गुलडान ने शुरुआत की, कलर्ड खाता नहीं खोल पाए और विकेट के पीछे कैच करवाया था उमर आलम ने उन्हें विकेट कीपर द्वारा। वो पहला विकेट मिला था। इस बार 13 बल्ले के साथ खेला जरूर, पर फील्डर तैनात नॉन स्ट्राइकिंग चोट से आगे निकले जरूर थे गुलडान, पर शुरुआत में ये अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। एक विकेट आप गंवा चुके हैं, थोड़ा सा संयम रखना होगा। आपस का जो कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर तरीके से निभाना होगा इन दो बल्लेबाजों को। एक साझेदारी की आवश्यकता उस विकेट की भरपाई के लिए। 13 पे 1, परिस्थितियां थोड़ी सी गंभीर, पर रॉबी के लिए ओ सीधा स्टंप्स पे नहीं, ये दिशाहीन थ्रो था। और पिछले 1-2 गेंदों से उसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठा अब तक दो बल्लेबाजों का। पहले गुलडान पिछली गेंद पर नॉन स्ट्राइकिंग चोट से काफी आगे निकल आए थे, फिर वापस लौटना पड़ा सुरक्षित। और इस बार इश्तियाक रॉबी, हालांकि फील्डर उस वक्त तैनात, गेंद सीधे उनके हाथ में गई है तो वहां पर रन लेने की गुंजाइश है नहीं। 13 एक विकेट पे आखिरी गेंद का आना बाकी दूसरे ओवर में। आदिल गुलडान और इश्तियाक रॉबी नाबाद 11 पे 7 गेंदों से सामने साजिद डार के। और एक बार फिर ये किनारा बाहरी, विकेट कीपर से चूक और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। एक और चौका यहां मिलता हुआ अल समद क्रिकेट क्लब को साजिद डार के विरुद्ध इश्तियाक रॉबी को अंतिम गेंद पर स्टंप्स को कवर किया, सम्मान देना चाहते थे पर बाहरी किनारा लेती हुई गेंद और विकेट कीपर और स्लिप के बीच में से ये गेंद निकलती हुई सीमा पार चली गई। चौका मिला अंतिम गेंद पर। ओवर की हो गई समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अल समद क्रिकेट क्लब 17 तक पहुंच चुके हैं। रन संख्या बहुत बेहतर, एक विकेट खोया जरूर है कलर्ड का, पर यहां से बेहतर साझेदारी, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं था ये शॉट इश्तियाक रॉबी द्वारा, तो फिर भी 4 रन जरूर मिले। वो रनों की आवश्यकता भी थी। 2 के बाद 17 एक विकेट पे अपने पहले ओवर में 13 रन खर्चे साजिद डार ने। आदिल गुलडान 4, इश्तियाक रॉबी 11। Edgy, however effective, 17 for 1. Umar to continue, fresh over. Slip continues to remain in place. That's a big shot. That's over long gone for a maximum. First 6 of the match. And it's Adil Guldan who packs it to perfection. It flies over long gone. Good shot there. On drive comes into play. Just admired that one as it flies over long gone. Good shot there. Robbie's gonna have a word with Guldan, and he knows that Guldan, he has to stay calm for a while. Runs will keep coming and runs are gonna come. Once the batter keep his wicket intact, runs will flow. He has that natural flow in his bat. 22 for 1. We saw 13 coming up that second over, which was expensive of the lot. And the fresh over begins with a lusty blow as it flown all the way. Guldan, now he's off the mark. We are 13 balls down into inning number 1, and Guldan has faced ball number 1 in 3rd over. That was the first ball where he unleashed. Good delivery, keeps him quite on that occasion. Good length and offer there. Just a single and he's off for a walk. With that, Robbie is back on to strike, who's batting on 14 of 9. He's looked good against Sajid Dar. And that boundary through the slip cordon, which was a deliberate one. And he just guided that one deliberately to the boundary. Fazil could do no more in this behind the stumps there. Okay, that he's a bit lucky there. He gets away with that one as the ball ricocheted off the bat, then onto the boot, and it goes down to the silly mid-off area. Luckily, that one didn't gone through.
And he survives 14 of 10 balls. He has played 2 brilliant knocks here. Yesterday and day before yesterday, he has done a good job with the bat. Today it's a must-win game. He has to do and play his part in today's game. Oh, that one pulled and pulled well. And that's out of here for a maximum. Scare on the on. He picks that one up nicely. He understood that one. And then takes him on. Hop tracker, complete hop tracker. Oh, take a look again. Where it is going. It's going and gone all the way. I think we need fresh ball in play now. We need new one in play, as that just disappeared on that portion of forward scare fence. It's almost mid-wicket area. Wow, colossal, lusty blow. 29 for 1 and Umar this over. He's gone for 13. Little amount of pressure onto the bowler now. There it is. The fresh ball is in play now. We are 16 balls down in inning number 1. Ishtiaq Robbie moves to 20 of 11. Hilal Khalid gone without scoring. Robbie hitting a 6. And earlier on it was Adil Guldan with that on drive long on. 29 for 1. This time good shot again. No need to run for those. And 4 of them cracking through covers, and nobody is going to stop that. How come they stop the ball? He hits the gap, and through that vast space, it goes past at a rapid pace. Wow. Scare driven. Beautiful shot. 33 for the loss of 1. Robbie is looking aggressive at the moment. Oh, that one. It's colossal again. This time over long off. The earlier one that gone over mid-wicket, but this one is timed to perfection again. Look at that 6. You would love to watch it again and again. Nice pickup. Over pitched 1. Oh, look at that. It is flying. And it flown all the way. Traveled all the way beyond the boundary line. Some 10-15 rows around that back. Wow. Magnanimous. This is 6 number 3. And it's going to deteriorate the figures of Umar Alam all of a sudden. He has picked up 1, but gone for plenty in this over. The second over. And he conceded too much. Overall, we are done with the third one. 39 for 1. And the current rate is 13 and over. Losing captain early. And they are still 39. That's the beauty of adjustment. Maintaining the discipline. 39. Pressure first ball. Is he safe there? Yes, he is. It's going to run down to the long on area. Will it cross the boundary? It does. It touches the boundary cushion, and the man behind the ball unable to stop it. It was Tajamul Baba who was trying to cut it off. Fresh over begins with the boundary. Carnage and assault continues in the middle. Ballers need some respite, and nothing is going their way. Just that wicket of Hilal Khalid. Amir Sofi walks up to Guldan. Is trying to fix his shoelace. The message is clear. We are one. We are brothers. On and off the field. 43 for 1. Prolific and a rapid start. Just 1 wicket down. Dabs it away. Deliberate one. But Khan pierces the gap. Khan carries this one through as he finds the yes man, Yashjeet there. We're into the 4th over. Sajid gone for 16. In search of a breakthrough. They're already 1 down. Guldan into the double figures onto 11. Good shot again. Scare on the on. Is there any fielder? Yes, that's why he was at ease. Looking at the bowler.
No worries at all with that shot. He knew that there is a man stationed at just a single 44 for 1. 44 पे 1 3.3 के बाद इश्तियाक इलाही उनके बल्ले से आज प्रहार देखने को जरूर मिले। 30 पे नाबाद है 13 गेंदों से और लगातार वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, गजब के फॉर्म में है। आदिल गुलडान 12 पे 5 गेंदों से 44 पे 1। साजिद डार का दूसरा, वो 17 रन खर्चे हैं। अच्छी गेंद थी, थोड़ा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, पैड से टकराई और वही खुद गेंदबाज ने आकर के गेंद को फील्ड कर लिया। पर जो शुरुआत इश्तियाक रॉबी ने एक बार फिर इस मुकाबले में अपनी टीम को दिलाई है वो काबिल प्रशंसा। बहुत ही बेहतर शुरुआत, पर इस पारी को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना वे जानते हैं, वो करना भी चाहिए क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना है तो फिर तेज दरार पारी की आवश्यकता। इश्तियाक इलाही को 44 पे 1। इस बार हवा में गई है गेंद, पर गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और तेज तरार स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, चौका मिलता हुआ 4 और खाते में। साजिद डार के विरुद्ध और इश्तियाक रॉबी लगातार प्रहार करते, किनारा जरूर लगा था फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई थी 4 रनों के लिए। चौका और खाते में 4 रनों के साथ अल समद क्रिकेट क्लब 48 1 विकेट पे 3.5। चौथा ओवर अंतिम गेंद। साजिद डार और इश्तियाक रॉबी 34 पे। लेग साइड में लेग स्टंप पर ये गेंद थी, पर संभवतः उनसे ट्राउजर से टकराने के बाद विकेट कीपर के पास चली गई और ऐसे में कोई निर्णय नहीं आया अंपायर का। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 समाप्त। 48 1 विकेट पे। अच्छा गैदर वहां पर विकेट कीपर द्वारा, हालांकि रन जरूर बचाए, उनसे छिटकती तो संभवतः सीमा रेखा से बाहर ही होती ये गेंद। 4 ओवर के बाद 48, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं यहाँ अल समद क्रिकेट क्लब ने। 34 इश्तियाक रॉबी ने और गुलडान 12 पे। साजिद ने 2 ओवर में 21 रन खर्चे हैं। 10.5 उनका इकोनॉमी रहा है, 10.50 इस मैच में। 2 ओवर उमर आलम ने। और यहाँ पहला परिवर्तन गेंदबाजी में, यशजीत का इस्तेमाल किया जाएगा अथवा किसी अन्य गेंद नैन का, ये देखने वाली बात हो गई। 2 ओवर की गेंदबाजी उमर आलम ने, 2 ओवर की गेंदबाजी साजिद डार ने। उमर आलम को 1 विकेट मिला, साजिद को सफलता मिली नहीं। 4 के बाद 48 1 विकेट पे 5वें की शुरुआत। नॉर्दर्न पवेलियन एंड से गेंदबाजी हो गई और यह कोशिश एक और विकेट की तलाश, एक दबाव बनाने के लिए गेंदबाजों को, टीम को। द रियल सुल्तान समरबुग। इश्तियाक रॉबी जो कि नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं हिलाल कलर के आउट होने के बाद, पर उस गंभीर परिस्थिति 0 पे वो विकेट गिरा था। 48 की ये साझेदारी इन 2 बल्लेबाजों ने अब तक निभाई है। विजन पंचल का इस्तेमाल, फुल टॉस थी, रिवर्स स्वीप के अंदाज में खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है गैप में और गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका। 50 पूरे होते हैं यहाँ टीम अल समद क्रिकेट क्लब के। 52 1 विकेट पे और 52 की ये साझेदारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से। गुलडान ने जैसे ही देखा थोड़ा अच्छी हाइट पे गेंद आ रही है तो ऐसे में अपने स्टांस को बदला, रिवर्स स्वीप खेला और चौका बटोर लिया। यहां सम्मान दिया क्योंकि अच्छी गेंद आ रही थी मिडिल स्टंप पे और ये अच्छी रणनीति इन 2 बल्लेबाजों की। पिछली गेंद पर चौका, यहां पर सिंगल। स्ट्राइक अब इश्तियाक इलाही के पास। 4.2 के बाद 53 पे 1। 5 रन आए 2 गेंदों से विजन पांचल। और क्या विजन पांचल या कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे, कोई अतिरिक्त दबाव बना पाएंगे क्या, यहां से इस साझेदारी को तोड़ने में सफल होंगे? क्योंकि देखने वाली बात होगी। 53 रनों की यह साझेदारी अब तक हुई है इस दूसरे विकेट के लिए इश्तियाक और आदिल गुलडान द्वारा। और विकेट की तलाश जरूर। विजन पंचल का इस्तेमाल जब किया गया है तो वो खास योगदान नहीं दे पाए हैं अभी तक की। अगर हम बात करें तो 3 गेंदों से उन्होंने 6 रन जरूर खर्चे हैं। इश्तियाक इलाही और आदिल गुलडान, ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज, अनुभवी बल्लेबाज बीच मैदान में साझेदारी में योगदान देते हुए, वो भूमिका अपनी निभाते हुए अपनी टीम अल समद क्रिकेट क्लब के लिए। नीचे रही गेंद धीमी गति से और फिर जाकर के अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। ऑप्शन से बाहर लपेट करके ऑन साइड में मारना चाहते थे आदिल गुलडान। ये उनका एक वीक जोन जरूर रहा है।
ठीक तरीके से गेंद की पिच तक नहीं पहुंच रहे हैं, गेंद की लाइन में आ नहीं रहे हैं। अपनी जगह खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, वो ऑफ स्टंप से बाहर लपेट कर ऑन साइड में मारने का प्रयास। 54 पे 1, 4.4, 2 के 2 खाना बाकी। विजन पांचल 6 रन खर्चा अभी तक 4 गेंदों से। अब तक रन गति पे थोड़ा अंकुश जरूर लगाया इस ओवर में। ओके 11, 13, 10, 12 रन पिछले ओवर से जरूर आए हैं और 4 ओवर में 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन खर्चे थे, जो करंट रन रेट था। प्रोजेक्ट स्कोर 231 पर 54, 1 विकेट पे विजन पांचल। ये बड़ा है, ये खूबसूरत है, ये सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का, कमाल का स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक आदिल गुल्डान के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। इस छक्के के साथ गुल्डान पहुंच गए 23 पे विजन पांचल के विरुद्ध। ये प्रहार और खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आदिल गुल्डान का, अपने आप को संतुलित किया और फिर ये 6 अर्जित किया अपने लिए, अपनी टीम के लिए। 60 पे 1, 4.5 के बाद 23 पे गुल्डान, 35 पे इश्तियाक रॉबी। विजन पांचल ने अब तक 12 रन खर्चे, आखिरी गेंद उनकी इस बार मिडिल स्टंप पे और बड़े आत्मविश्वास के साथ वहां पर उसको खेला। आदिल गुल्डान ने ओवर की समाप्ति 5 समाप्त 60 पे 1, अल समद क्रिकेट क्लब। So satisfying. Over extra cover. Timing was pure. Simply pure class from Adil Guldan. It's 60 for 1 after 5 overs. This is their dugout. They're going 12 and over. That is simply majestic with the bat. And captain is not going to roll his wrist over the ball. He's going to stay bit away from operating because he's gone for runs here. The first over, that was tight one where he removed Hilal Coloured. But the second over, we saw 3 sixes coming. He was on the receiving end. Now he has decided to go with the spinners. He's going to give himself some rest. And we'll come back after that, after some time to operate again, to bounce back. But as of now, it's 60 for 1 after 5 overs. Robbie 35 and Adil 23 of just 10 balls. The strike rate is so nice. Both batting with the strike rate of more than 200 at the moment. ESG top rate for the first time in today's game. First ball, it's aerial, it's upish. Is he in danger? Look at the fielder. He's trying to approach the ball, but unable to make it to the ball. 2 men converging in the end. It was Sajjad Ganai and Hinan Malik. Important catch. Would have been a big one, that to Ishtiaq Ilai, but he's lucky that it landed in no man's space. Fielder stride. Both were going off to that one. It was aerial, it was upish. Wasn't in control. 1 for 62. Yes, nearly beaten him on the very first ball. The next one, soft hand has provoked him to have a press on to that one, eyeing a big shot again. But the first one, he has his heart in his mouth for a while. That's why he decided to keep it away this time. 1, 2, 3, 4, 5, 6 men on the off. Heavily cordoned upside, packed offside. Now he goes across the line, he connects. And that's out of here again. Some 10, 15 rows back. Huge 6 again. And yes, Jeet, he need to come up with something special and he need to mend his lines. But nice pickup, bending his knees. That's important. You have to crouch low to find the ball properly. One more ball gone away. Looks like that. Shaukat Maddy is going to walk onto the field with another ball here. It looks like that. He's got the briefcase in his hand. 68 for 1. This is over number 6 we are in. It's bright sunshine, gentle breeze, wonderful pictures. What an atmosphere. Electrifying and electric. And the two batters, they're in mood of hitting the ball. They're hitting leather with perfection here. Robbie into 40s on to 43. Adil 23 of 10. And the strike rate is so impressive and is of next level.
no fear, and bowlers to great extent. They're astonished now. They're fearing as the batters are on charge here. They're on song. Runs are flowing. It's like rivers never go rivers. The flow of water. We have seen the flow of blade, and the ball is flowing and flying to each and every corner of the field here. Be the offside, be the onside. But that shot very close low and connected that shot. Yash is absolutely astonished and he has no idea. He is surprised. Now he's got another new ball in play. We lost 2 balls. How many balls we're going to lose today and in today's game? It's going to be another big loss when it comes to the number of balls. And 2 of them already disappeared from the center. 6th over, the last of mandatory power play. The good thing about the bowler is he has that smile on his face. That is the positive thing. And the positive sign, one good thing about the bowler, that he has little smile on his face. You have to look positive. You got to be positive. 1 for 68, the last over of mandatory power play. On strike, Ishtiaq, 7 away from his second 50 of the tournament. This could be tight. We'll have to hurry. Are they going to look for the second? Yeah, of course. There is a fumble, and that allowed the extra run. 3 men converging on that occasion. None could pick the ball up. Not a clean stop. That yielded the second run. It's 70-45 to Ishtiaq Elai. Overall 74 Al Samad Cricket Club. It's all about batters losing their captain in the first over. Since then, these two are put on 70. Now, trying to reverse sweep that one. Needless. I don't know why he tried to do that. He's just trying to open up the offside. It was better to go with a straight bat, but he decided to come up with that reverse hit or the switch hit. That isn't the need of an hour. You have to stick to basics. Runs were coming and balls are going away. So better is to stick to basics. Find a ball where you can hit it. Was there an opportunity? Was there an opportunity? Fazil Rashid, he is pressing his chest area, that portion, and yes, Jeet, his reaction is telling that there was something. Did it connect to the bat? Did it hit the bat? Then going past. Batter is a bit lucky that it eluded stumps on way to wicketkeeper. Power play is done. 70 for 1. Completely dominated by Al Samad Cricket Club. This is called sheer dominance. And Al Samad are right on top at the moment. 6 overs and it's 70. रनगति बहुत बढ़िया है क्योंकि रॉबी और आदिल गुल्टान ने ये 70 रनों की साझेदारी निभाई है बहुत ही बेहतर. जेके सुपर सीमेंट टाइटल पार्टनर रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस. 16वां मुकाबला और वो कॉन्फिडेंस दिखा इस बल्लेबाजी में आज. अल समद की अगर हम बात करें, शुरुआत में हिलाल कलर का विकेट खोया, लेकिन उसके बाद से वो 0 पे विकेट, 70 की ये साझेदारी, 23 का योगदान आदिल गुल्टान का, 45 इश्तियाक इलाई का, 68 रन इन 2 बल्लेबाजों ने बनाए, 2 वाइड की सूरत में आए हैं. तो ये अब तक का लेखा जोखा. विजन पंचर का पिछला ओवर 12 रन गए थे, नए ओवर लेकर के तैयार. गुल्टान ने खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतर स्ट्रोक, कोई मौका नहीं गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ यहाँ गुल्टान को. और 4 और खाते में 74. यशजीत के विरुद्ध ये चौका. रंग में दिखे हैं गुल्टान आज पिछले 1-2 मुकाबलों से, और पिछले मुकाबले में भी एक बेहतरीन पारी खेली थी 47-49 की, और फिर इस मुकाबले में भी एक अच्छा अभी तक का उनका योगदान रहा है इश्तियाक रॉबी के साथ. और जब दोनों बल्लेबाज बेहतर तरीके से निडर होकर के आत्मविश्वास के साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके बल्लेबाजी कर रहे हो, योगदान दे रहे हो अपनी टीम के लिए, तो फिर आप पे किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता. और वो चीज़ दिखी है क्योंकि यशजीत एक अच्छे गेंदबाज हैं, पर अभी तक वो सफल नहीं हुए एक अतिरिक्त दबाव बनाने में बल्लेबाजों पर. विजन पांचल, दूसरा ओवर उनका 16 अथवा 17 रन खर्चे हैं. पहली गेंद पर चौका, वो खूबसूरत स्ट्रोक था गुल्टान का. और अब सामने इश्तियाक रॉबी 45 पे, 75 पे 1. यशजीत, रॉबी जी हाँ डिपॉजिट कर दिया सीधे स्टैंड्स में. एक और छक्का, कमाल की बल्लेबाजी, और 50 रन पूरे होते हुए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन
शानदार योगदान, आकर्षक बल्लेबाजी इस रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन में इश्तियाक रॉबी की अलसमत के लिए। इस संभवतः उनका दूसरा अर्धशतक है, इससे पूर्व एक अर्धशतक लगा चुके हैं और 30-40 रनों की एक और पारी उन्होंने खेली थी पिछले मुकाबले में। और यहाँ पर भी एक और प्रदर्शन, तो लगातार एक कंसिस्टेंसी उनकी बल्लेबाजी में, ये महानता इस बल्लेबाज के, निडर होकर के क्रिकेट खेले। और जब जब आए हैं तब तब परिस्थितियां थोड़ी गंभीर थी और उन परिस्थितियों में न सिर्फ उन्होंने उन परिस्थितियों को सजाया संवारा उस पारी को, बल्कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी निडर होकर के, और ऐसा कहीं पर भी लगा नहीं कि वो किसी प्रकार के दबाव में है। 51 पे 24 गेंदों से रॉबी, 81 एक विकेट पे 6.3 के बाद 1 छक्का 1 चौका 1 सिंगल, 11 रन 3 गेंदों से विजन पांचाल। विजन इस बार थोड़ा लेग को ऊपर फेंका, पर रॉबी सामने है, जानते हैं किस प्रकार से इन परिस्थितियों में बल्लेबाजी करनी है और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं। अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। 81 से बढ़कर 82, एक विकेट पे 6.47वां ओवर। अल समद क्रिकेट क्लब बनाम द रियल सुल्तान समरबुग 16वां मुकाबला JK सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। यहां कॉन्फिडेंस एक बार फिर इस शॉट में देखा है और सीधे साइड स्क्रीन की ओर बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका आदिल गुलडान के बल्ले से वे 32 पर पहुंच गए 13 मात्र गेंदों से। 86 पे 1, 6.5 के बाद अल समद क्रिकेट क्लब की टीम लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार प्रहार, आक्रमण करते हुए। और ये आक्रमण जरूरी भी है, ये आक्रमण काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आप जब बेहतर योगदान देंगे, जब आप बेहतर बल्लेबाजी करेंगे, तो फिर आप पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, आकर्षक बल्लेबाजी। और ऐसे में विजन पांचाल 28, 1.5 ओवर की गेंदबाजी में क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है। इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का 2 सिंगल, और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। 2 ओवर में 29 विजन पांचाल ने खर्चे हैं। इश्तियाक इलाही 52 पे 35 गेंदों से 25 गेंदों से 5 चौके 4 छक्के 208 का स्ट्राइक रेट, क्या कमाल की बल्लेबाजी इश्तियाक इलाही रॉबी द्वारा। शानदार प्रदर्शन। ओवर की समाप्ति 7 समाप्त और 7 के बाद 85 एक विकेट पे। Great knock again. He's trying to maintain that discipline. Nazir earlier mentioned that consistency. The consistency matters. The performance is telling us the story, the entire story, which is unfolding on your screen right now. And what a batsman he has been. Another beautiful knock with brute force and powerful show from Ishtiaq Ilahi. 52 of 25, batting with a strike rate of more than 200. And that's another interesting thing. The important thing, he's still batting with more strike rate of more than 200. That one, that's in the gap again. Wide of Extraco, fielded as well. What a stop. What could have been a boundary. And limits the scoring down to a paltry single. Guldan is another terrific batter in the middle, who's on to 33 now of just 14 balls. The two men in the middle, treat to watch. Batters and the spectators around the center, they're loving this partnership. It's 88. These two put on 88 for the second wicket. Good shot this time. There is a fumble. Will it run down to the boundary? Looks like it's going to beat the man. It does. That's 4. 92 for 1 in 8th over. Ishtiaq Robi, he continues to go after. And that's called the consistency. He's going to persist. Punched. And beats the man at extra cover. Gets 4 for that. Ahmed Sufi unable to prevent that one. As the ball goes past in no time. Heenan could only watch the ball. Robbie 56 of 26. This time trying to play inside the line. And it drifted down the leg side. A big wide there. Pressure is on Yashjeet right now. He's feeling that. Over the past couple of minutes we have seen that even Yashjeet is unable to control the situation in the middle. And the run flow. It's 93. He wided that one. In the meantime, Yashjeet will continue to operate. He's in his second over. Good delivery. Batter line this time. Could only push it away. Just a single.
It's 93 for the loss of 1. This is over number 8 wherein there is a man at fly slip, there is a man at point, extra cover, and man at sweep rock cover boundary. Long off is in place. Hinan Malik is there. The next one. Oh, this could be tight one. And up goes the finger. Needless from batter there. Getting your eyes in, then playing that kind of a shot which is not needed at all against the run-up play. And it is Yashjeet the man, the hero for his team, as he removed the danger man with that beauty of a delivery. And needless, it was better to go with a straight bat. Look at that one again. No need to go for that switch hit. And is trapped well in front. Up goes the finger. Ravi Kumar Chaurasia making another good call there. What a partnership it has been. A game-changing stand between Robbie and Adil Guldan. It capped low, it keeps low, bit low, touch low, tad low, and going on to hit that just above the knee roll, but he crouched low to sweep the ball, going for that reverse sweep, and that's the reason it was going on to hit the stumps. It's 94 for 2. It isn't easy to carry on and continue with hot and humid conditions around the center. Hits up to these players was showing that positive intent, the positive energy, aggression is there, commitment and determination among the camp, which is wonderful to watch. 2 for 94, and the partnership, the stand of 94 is broken, and the man who broke that stand, he breaks that stand, it is Yashjeet. He picked up a wicket of Adil Guldan, and the cricketing dawn is sent packing back to hut. This over 1-4 makes it 5, 6, 7. 7 runs coming of 4 balls and a wicket falling. Eventful one, full of action. A boundary coming, a wided one, picking up a wicket. Makes it a good one for bowling unit. That brings Amir Lefty. Lefty has failed badly in the tournament. He has an opportunity to find that form, to regain that form, as he is struggling over the past couple of days. Will he find? Is this the game where he could find his form? Only the time will tell us. He comes at number 4. Gentle breeze, little breeze at the moment. It's day number 10 and we have the match number 16 underway. This is JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Newcomer against the likes of Yash. And Yashjeet keeps it simple and tight. A kind of a rock back from batter there. Ishtiaq Ilai, 57 of 27. Cool and well composed knock. Composure is there, he has shown that. The resilience. Is he going to preserve his wicket? Will he carry on? As long way to go. This is just the over number 8 we are in. Good shot there. Not 4 runs. He's going to find the man in place. Successful over from Yashjeet comes to an end. A wicket after ages for the real Sultan Sumerbugh. Much needed one. Something that will boost the confidence of pack. And these young lads will find a way where they can dictate terms and put pressure and drive the singles and boundaries. Right now, this is the need of an hour. After getting rid of one of the batter who's looked fearless from ball 1, he's known for those cricketing shots and trying to go distant. Sometimes he loved to go hammer and tonk, and that shot he was trying to show that power what he possessed, and the range of shots going for that reverse hit, and was trapped well in front because of that low bounce on offer. 2 for 94, 8 done. We're going to be 9th over. Robbie will face the likes of Jasmeet Nan. What Nan is going to do, is he going to keep eyes on the batter? That remains to be seen. It's over to you, Nazir. 94 पे 2-8 के बाद अच्छी रन संख्या स्कोरबोर्ड पे खड़ी कर दी है अलसमद ने। हालांकि शुरुआत में अलसमद ने विकेट गवाया था हिलाल कलर का 0 पे, फिर 92 की वो साझेदारी और 92 पे जाकर के विकेट गिरा था आदिल गुल्डान का एक बेहतरीन पारी पर। इश्तियाक रोबी 57 पे, आमिर लेफ्टी उनके साथ नए बल्लेबाज। 2 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली हैं, खाता खोलना बाकी। जसमीत नैन
एक और परिवर्तन गेंदबाजी में, जहां तक द रियल सुल्तान समरबुक की टीम का सवाल है। लेकर क्या है 9वें ओवर में, क्या ये परिवर्तन रंग लाएगा? विकेट की तलाश, तेज गेंदबाज है। दाएं हाथ से पहली गेंद लेकर के, गेंद अच्छी थी पर स्ट्रोक कमाल का और कोई मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। एक और चौका इश्तियाक इलाही के बल्ले से निकलता हुआ और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या पहुंच गई 8.1 के बाद 98। 2 विकेट पे हिलाल कलर्ट और आदिल गुल्डान, जो कि पारी का प्रारंभ करने आए थे, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। कलर्ट ने कोई खास योगदान नहीं दिया, पर गुल्डान ने एक अच्छी पारी खेली और इश्तियाक रॉबी बीच मैदान में, उनके साथ आमिर लेफ्टी। जसमीत नैन परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी, पहली गेंद पर विकेट, पहली गेंद पर चौका। विकेट की तलाश, रॉबी 61 पे, 98 पे 2, 8.1 ओवर की गेंदबाजी। जसमीत नॉर्दर्न पवेलियन एंड से अगली गेंद लेकर के, बेहतर गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, ऑफ स्टंप के बिल्कुल आसपास। टिप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई, पसीने से तरबतर इश्तियाक रॉबी पर क्या कमाल की पारी उन्होंने खेली है इस मैच में। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने 30-40 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी और उससे पूर्व पहले मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक की पारी। कमाल का प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में अब तक अल समद क्रिकेट क्लब के इस बल्लेबाज इश्तियाक रॉबी द्वारा। 61 पे नाबाद 29 गेंदों से ये दूसरा अर्धशतक इस प्रतियोगिता में उनके बल्ले से। यहाँ खूबसूरती के साथ पुल किया और गेंद सीधे वहां बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। प्रयास वहां पर फील्डर का जरूर बाउंड्री लाइन पे असफल हुआ, चौका मिलता हुआ एक बार फिर इश्तियाक रॉबी को और इसके साथ ही 100 रन भी पूरे होते हुए टीम अल समद क्रिकेट क्लब के। 4 और 102 रन संख्या। और इस बार खूबसूरती के साथ बैक ऑफ द हैंड ये गेंद जरूर फेंकी थी पर पढ़ दिया इश्तियाक रॉबी ने। अतिरिक्त उछाल जरूर था, ऑन द राइज खेले जरूर, चौका मिला। 102 पे 2, 8.3 के बाद 8 रन 3 गेंदों से। जसमीत नैन अगली गेंद लेकर के रॉबी के लिए, इस बार आवश्यकता के गलियारे में फेंकने का प्रयास, पर वहां पर फील्डर ने डाइव लगाकर रोकने का प्रयास, वो असफल हुआ और गेंद सफलतापूर्वक बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका। 3 चौके अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। 106, 2 विकेट के नुकसान पे और जसमीत नैन कोई खास योगदान नहीं दे पाए, कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए अब तक इश्तियाक रॉबी पे। रॉबी बड़ी खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से। यहाँ पे डाइव लगाकर रोकने का प्रयास था, वो असफल रहा और 4 और खाते में। 3 चौके इस ओवर में आ चुके हैं जसमीत नैन के विरुद्ध। 12 रन उन्हें खर्चे 4 गेंदों से। 106 पे 2, 8.4। रॉबी 69, 31 गेंदों से। साथ में आमिर लेफ्टी, जिन्हें खाता खोलना बाकी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे। अच्छा खासा तापमान बख्शी स्टेडियम श्रीनगर, JK सुपर सीमेंट राइट प्रीमियर लीग दूसरा एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और वो आत्मविश्वास से एक बार फिर इस बल्लेबाजी में इश्तियाक रॉबी द्वारा। 106 पे 2, 8.4 के बाद 2 गेंदें बची है। जसमीत इस ओवर में अगली बार रॉबी सामने, यहाँ अपने कदम चुके वापस लौटना पड़ेगा अपने बॉलिंग मार्क पे। यहाँ गेंदबाज जसमीत नैन को, जो कि परिवर्तन के तौर पर इस समय अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं पारी का द रियल सुल्तान समरबुक के लिए। 9वां ओवर और अभी भी 2 गेंदों का बाकी इस ओवर में। इस विकेट पे अच्छे खासे रन बने हैं पिछले मुकाबलों से। रॉबी एक बार फिर बड़ा प्रहार, और क्या यहाँ पर चौका मिलेगा? नहीं, पीछे फील्डर तैनात हैं, 1 रन जरूर मिलेगा। रन संख्या में वृद्धि होती हुई 107, 2 विकेट पे 8.5। अंतिम गेंद का बाकी 13 आए 5 गेंदों से इस ओवर में। 245 प्रोजेक्टेड स्कोर, जो करंट रन रेट से यदि रन बनाते रही टीम। कोशिश जरूर होगी, यहाँ प्रयास जरूर होगा इस साझेदारी को ऐसे तैसे करके तोड़ा जाए, एक विकेट प्राप्त किया जाए, लगातार अंतराल पे रन गति पे अंकुश लगाने के साथ साथ विकेट भी प्राप्त किया जाए, तो फिर आप कम से कम लक्ष्य तक रोक सकते हैं। पर जो परिस्थिति इस समय है, हालांकि अभी भी आधा सफर, अगर पहले सत्र की बात करें, 10 ओवर की बात करें, उसमें 1.1 ओवर की गेंदबाजी अभी भी शेष है 10 ओवर में। और 107 रन 8.5 में अल समद क्रिकेट क्लब की टीम बना चुकी है। अगली गेंद इस बार आमिर लेफ्टी के लिए खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, पीछे फील्डर तैनात हैं और जब तक वे गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, यहां रन आउट का अवसर बना था। डाइव लगाकर सुरक्षित क्रीज में पहुंचने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज का। 107 ओवर की समाप्ति होते हुए 9 समाप्त, 107, 2 विकेट के नुकसान पे अल समद क्रिकेट क्लब। He's lucky to survive. Would have been a big blunder there. That was a quality shot of the bat of Amir lefty. And Yash, with that great effort in the deep, settles in with a good return.
But Jasmeet Nan, that was a clean collection that saved the batter. And on the other side, you can see that Ishtiaq Robbie nearly sold his partner, then telling him, it isn't my mistake, and simply shake off a hat. But he shocked batter for a while. 108 for 2 after 9 overs. 11 overs are going to come. 66 balls. One more change in the bowling department. The captain brings Amir Sofi on. Jasmeet Nan. Another over from pace. And he saw that pace were unable to put brakes on. They need to put brakes on at the moment, as it's already 100 on the board with 11 overs to go. 108 is there. And that's good thing from Amir Lefty. He's handing strike to Ishtiaq Elai, who's batting in sublime form today, on to 70 of just 32 balls. An inning where he has shown bowlers that how dangerous I am and how I can terrorize the bowlers. That is the capability. He has that ability of hitting the ball long, wide, sometimes huge. It's 109 for 2. This time defensive push comes into play. There was a little turn and offer. It was moving a little bit outwards. And Nasir Ghana is yet to operate. And captain is yet to bring him on. He's still waiting for his turn. Vijay Panchal were used. Wasn't effective. Jasmeet Nan just an over. He conceded runs on drive. Will pick up one more run. And Nasir Ghana is also a good fielder. He's so quick. You can see that from outfield to infield. He's coming quickly onto the ball. Reflexes are of next level. The agility is there. He has been agile. Nelson for 2. Amir bowling with the left with that side arm action down the leg side. Gonna be wide. He was trying to paddle it away. It was a bad one further down leg, but doesn't connect. That was a big wide. So an extra ball is coming up. This one wraps him on pad, short for LBW, and is turned down. And look at Amir. So he's pleading before umpire. He's telling him, look at this one. Look at this one. There was a low bounce and offer again, and Ishtiaq misread that one completely. Doesn't pick that one. And is immensely lucky that he's still breathing in the middle. That was a needless from Ishtiaq Robbie. And look at Ravi Kumar Chaurasia. And he told him that look at the screen where the ball is going. How come I raise my finger? Next one, there is a little fumble, and that will give Ishtiaq Robbie a single. Back and cross, then going the other ball, trying to go for the sweep. He's a bit lucky there. He's so lucky that trying to find that onside area. Ishtiaq, 71 of 34. Second 50. And in another game scored 30 plus. That is another vital contribution. So he's scoring runs for Al Samad. Now Al Samad need to find a way where they can win a game. As they won just one and lost 2 of the games. It's their important game. 114 for 2 after 10 overs. Halfway stage. Ishtiaq Robbie. This is the second half century of the tournament for Ishtiaq. Amir Lefty yet to find a way. He's unable to adapt to the conditions here. Ishtiaq Robbie, the lone man who has shown that resilience, he's sweating it out. You can see that he's fighting at the moment. He's got that fighting spirit. I don't think he's going to give up. And there is a kind of a fun going on between Sajadar and Ishtiaq Robbie. The title partner of JK Super Cement Red Premier League, it is JK Super Cement itself. Banai Mazboot Kashmir, Build Strong Kashmir. And we got the Athwas, Retail and Athwas with Confidence. It's powered by Athwas.
Athwas with confidence, and then thanks to the sponsor of JK Sports Time and the support in the Fashion Feast, the Shining Star Pop or MHM, multi-brand by Rafiwani, Hamda Americans, the importers and the exporters, H&D Complete Kids Wear near Nettipora, Srinagar, and Valley Fresh Cold Chan. 214, the resurrection is going on at the moment after losing that wicket number 2. That was an incredible partnership between Ishtiaq Robi and Adil Guldan. The duo, the way they brought their side back into the game after losing captain early cheaply, gone without scoring. Heads up to the two men. They stood their ground. They kept themselves grounded and decide to fight it out. The way they fought out, and it's their fight which resulted in 114. Now they are 2 down, 10 overs to go. The first 10, it took 10 overs to reach 140 at the cost of 2. Now there are 8 wickets in kitty with 10 overs to come. What do you think? To me, should find somewhere around 180, 190 at least. If they can't score with the same pace, to some extent should finish around 190. But the scorecard is telling us that 220, it's important now. They need to find there because they got a terrific start. Now in the middle overs from 7 till 10, they kept it in their control. They're not allowing it to slip away. Now what remains to be seen from 11 till 14? If things didn't change, I believe that they can still find a mark around 200 or beyond that. But next 4-5 overs are going to be crucial. And on the other side, if we talk of the bowling unit, they need to find a way, get 1 or 2 wickets in quick succession to pull things back at the right time. Can they go for that kind of a kill? Do they have that instinct? Can they develop that idea, that habit of getting rid of the 2 batters in between? But on the other side, these 2 batters, I don't think they will let it slip away. They will try to strengthen themselves further in today's game. ये पहला सत्र कुल मिलाकर अल समद क्रिकेट क्लब के नाम, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कोशिश जरूर होगी एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की, पर कम से कम 180 190 तो खड़ा करना होगा इस विकेट पे। और पिछले कुछ मुकाबले में देखा गया कि एक टीम ने 10 ओवर में जो शुरुआत मिली बहुत बढ़िया, लेकिन अगला सत्र जो रहा 10 ओवर का, उसमें ज़्यादा विकेट गंवाए और रन उतने बने भी नहीं है। वो कहानी हमने पिछले कुछ मुकाबलों में देखी ज़रूर है, पर यहाँ आपको स्टार्ट बेहतर मिला है। 2 सेट बैटर बीच मैदान में, आमिर लेफ्टी 4 पे हैं, पर इश्तियाक रॉबी 72 पे हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर होगी वो बड़ा लक्ष्य 200 प्लस यहाँ पर रन स्कोर करने की यहाँ अल समद क्रिकेट क्लब द्वारा, पर क्या उसमें सफलता मिल पाएगी ये देखना होगा। पहला प्रयास अब 200 से अधिकतम, फिर दूसरा प्रयास विपक्षी गेंदबाज तो कंट्रोल बेस्ड सिचुएशन को रखें, इन परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी जो हो रही है उसके मुताबिक आपको अब गेंदबाजी करनी होगी। प्लान्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट करना होगा। प्लान ए आपका सफल नहीं हुआ, प्लान बी को एग्जीक्यूट कीजिए, प्लान सी को कीजिए, पर यहाँ रनगति को रोकना होगा, क्योंकि इस विकेट की परंपरा मैं कहूँगा, एक शब्द इस्तेमाल करूँगा, रही है। पहले 10 ओवर बहुत बढ़िया विकेट कम खोए हैं, पर अगले 10 ओवर में आपने विकेट ज़्यादा खोए और रन उतने बने भी नहीं हैं। हमने बहुत सारे ऐसे मुकाबले यहाँ देखे हैं, पर यहाँ अल समद के पास एक पर्याप्त मौका है एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने का। 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 114, 8 सुरक्षित हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इश्तियाक रॉबी 72 पे नाबाद, 35 के दूसरे सेट बैटर, सामने आमिर लेफ्टी, और नासिर गनई का इस्तेमाल अब 11वें ओवर में। पहली गेंद खूबसूरती के साथ आमिर लेफ्टी द्वारा ये स्ट्रोक, हालांकि वहाँ फील्डर ने रोकने का प्रयास किया जरूर था, उनसे गेंद छिटकी, बैकअप पे खिलाड़ी थे, सिंगल मिल गया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को एक और खाते में, 115 पे 2। 11वां ओवर, 16वां मुकाबला। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब के अलावा रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से ये लाइव प्रसारण बख्शी स्टेडियम से आप तक पहुंच रहा है। एंजॉय कर सकते हैं मुकाबला 16वां जेके सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। गनाई अच्छी गेंद, बेहतर गेंद थी भैया, थोड़ा सा आत्मविश्वास ज़रूर लौटेगा गेंदबाज का, क्योंकि इश्तियाक रॉबी आक्रमण कर रहे हैं और उन्हें खामोश रखना आसान नहीं है, पर उनके विरुद्ध आप गेंदबाजी किस प्रकार से करेंगे, ये एक चुनौती न सिर्फ अपने आप के लिए, बल्कि वो चुनौती आपको इश्तियाक इलाही को भी देनी होगी, जो इस समय 72 पे नाबाद हैं, 28 रन दूर हैं अपने शतक से, मात्र 1 शतक इस प्रतियोगिता में अब तक साहिल शफी के नाम, और उसके अलावा किसी भी गेंदबाज को शतक, बल्लेबाज को शतक नहीं मिला है। पर यहाँ गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए एक और चौका सामने की ओर खेले, खूबसूरत दिल का स्ट्रोक, रॉबी का चौका मिलता हुआ अल समद और रॉबी को। नासिर गनई और बेहतरीन तरीके से
खूबसूरती के साथ ये 4 रन बटोरे, सामने खेला, सीधे बल्ले से चौका बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 4 रनों के साथ रॉबी पहुंच गए 76 पे और कुल रन संख्या इस समय अल समद क्रिकेट क्लब 119 पे 2, 37 मात्र गेंदें, 76 रन पे नाबाद, 24 रन दूर अपने शतक से। क्या दूसरे बल्लेबाज होंगे जो इस प्रतियोगिता में शतक पूरा कर पाएंगे? हालांकि एक दो बल्लेबाज नज़दीक ज़रूर पहुंचे थे पर 80s 90s में आउट हुए ज़रूर हैं। यहाँ हवा में गई है गेंद, पीछे खिलाड़ी है और ये कैच थमा दिया और पारी हो गई समाप्त। यहाँ पर इश्तियाक रॉबी की बात कर रहे थे कि क्या दूसरे खिलाड़ी होंगे जो उस 100 क्लब में शामिल होंगे, शतक तालिका में ये दूसरे बल्लेबाज बनेंगे, पर अगली ही गेंद पर कैच थमा दिया। 76 रनों की पारी खेली, नासिर गनई ने साझेदारी और उनका विकेट लिया। हाँ, अच्छी गेंद पे, हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे पर गेंद काफ़ी देर हवा में रहने के बाद वहाँ खिलाड़ी संतुलित होकर के कैच लपका और इस प्रकार से नासिर गनई ने चलता किया इश्तियाक रॉबी को। तीसरा विकेट गंवाया है अल समद क्रिकेट क्लब ने। वो कहानी जो हम जिक्र कर रहे थे कि पहले 10 ओवर में अच्छे खासे रन बने, अगले 10 ओवर में विकेट भी गंवाए और उतने ज़्यादा रन बनाए नहीं है। बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं पिछले मुकाबलों में, तो क्या वही कहानी यहाँ पर भी दोहरा पाएंगे ये गेंदबाज? द रियल सुल्तान समरबुग की 119 पे 3, 10.4 के बाद 2 गेंदों का आना बाकी, 223 प्रोजेक्टेड स्कोर, पर कोशिश जरूर यहाँ वापसी करने की द रियल सुल्तान समरबुग की टीम चाहेगी। कम से कम लक्ष्य तक रोका जाए, यहाँ टीम को खेला जरूर था। और देखा जाए तो आमिर लेफ्टी 5-7 गेंदों से 119 पे 3, 10.4 ओवर की गेंदबाजी। नासिर गनई इस ओवर में 5 रन 1 विकेट, 2 गेंदों का आना बाकी और समर आए हैं नए बल्लेबाज। आज उन्हें बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया है क्योंकि नंबर 6 नंबर 7 पे बल्लेबाजी के लिए उतारा जाता था, पर आज आवश्यकता, पिछले मुकाबले में बेहतरीन पारी उन्होंने खेली, यहाँ आवश्यकता है, वो फॉर्म में है, तो मैं समझता हूँ अच्छा निर्णय कप्तान का। पर अब जाकर के जब उन्हें नंबर 4 पे उतारा गया है, नंबर 5 पे उतारा गया है, तो यहाँ से उनको एक बेहतर बल्लेबाजी करने की भूमिका निभानी होगी। 10.4 के बाद 119, 3 विकेट पे अल समद क्रिकेट क्लब। Brilliant call. Good decision to make. Promoted Samar Amin. Samar is in at number 5. Ishtiaq Robbie thrown his wicket away. That was a needless one, a bizarre kind of away, getting out after scoring invaluable 76. Would have been the second one to touch that triple figure mark in the tournament. Wasn't up to the pitch of the ball, and there was an and a bounce and off. Still going with that cross the line shot. And he knew that once the ball left to the bat, he was damn sure that I couldn't contact it properly. I was unable to connect it in such a way that I would have wanted. And in the end, it landed in the safe hands of fielder Jasmeet Nan there. And Nan making no mistake, taking control. And other bowlers failed badly and miserably against the likes of Ishtiaq Robbie. They were unable to make any sort of adjustment. As he was going with that ferocity, it was just like that downtown and distant, and it was equally balanced by some of the cracking shots, some of the copybook and stylish proper cricketing shots. Needless to me, but you know that it's the batter's mistake, and these things are going to happen from ball 1 till the very last ball of the game. 1-1 for 3. If batter doesn't make mistake, then how come he get out? So 1-1 for 3. Nasir Ghanai provided that much needed wicket. Broke on that stand again. Amir Sofi will continue. As ball 1 over none for 6. With that side arm action, bit typical and difficult to pick at times. Because he's bowling with that side arm action. There is an inner bounce. We've seen that couple of occasions ball didn't rise that much, like that of he's firing it in like that of in Salanter, or at times it looks like that diagonally it's coming towards batter. 3 down, 122. That one, that's what I was talking about. It hardly rises. That one, it didn't bounce again, and I still remember that Kedar Jadhav, he used to bowl like this. And there was hardly bounce an offer for Kedar with that side arm action. Umpire Churasia telling him, you are coming in front
so I can't judge anything. It becomes all of a sudden that opaque surface, and it looks like that the front on side is totally invisible. So you have to be bit away and let me know what's going on. 424, 3 singles coming. The good thing for the two batters, they are just trying to rotate now, and foundation is already laid. Only thing middle need is to rotate ones, twos. At times you can look for threes, but the ones, twos are going to be important. And Sabar knows once he get his eyes in, he can unleash and he can take bowlers on. He can go for the big shots. He is capable to do that. He will be eyeing big shots once he get his eyes in. He knows how to change gears when required. This over is another good over from Amir Sofi. Just 4 singles. The final ball of his over is coming up. This time a kind of a hop tracker. This time he gets full connection. Enough on it. Connected nicely. Gets 4 for that. The man at Kokan unable to protect that. Unable to prevent that. Look, that was there was good height. And he has made that adjustment. Crouch low. That's the beauty. Getting low and connected that shot. That is the only idea you have to do. The adjustment I'm talking about. This is called the making that adjustment. Picked that length nicely. 129 for 3. 12 overs gone. 48 balls remaining. 8 overs to come for Al Samad. They have plenty of batting to come in today's game. Must win clash. 2 invaluable points up for grabs for both the teams. Al Samad will be eyeing a comeback here. They gone down twice in the tournament, winning just a game. Baramullal based boy Nasir Ganai is operating first over, gone for 7 and picked up that important wicket. The one who surprised everyone and bowlers. They were unable to understand how to keep Ishtiaq Robi away from hitting the ball. Each and every over we saw a couple of hits coming, and he used his power. Here is the next one. Oh, that's a good delivery. Equally to the task batter there. Now, Nasir Ganai is trying to read the batter properly. He's mixing it up here. He's following the batter. What he's doing, he's looking keenly at the batter. Observation is so nice. He's observing the moment from batter. Summer will face the likes of Nasir. It was a kind of a slower one, but can't keep it within the arc. It drifted further and moving outwards, goes down the leg side, called as a wide. Vijan Panchal. He's just trying to shine it up a bit. And Nasir Ganai, something is cooking inside his body. Deep thinking is going on. Driven straight. That's a good looking shot. 2 men converging. And Sajjad Ganai. Unbelievable stop. Saved 3 runs. Yashjeet was there to back it up. But look at that stop. Would have been a boundary. Saving 3 runs. Good stop. Nice effort by Sajjad Ganai. 1-3-3 for 3. The next one flicked away nicely. Square on the on. Will just be 1. Panchal is doing good on the field. From circle to outwards. He's so quick there. Nasir is going with that mix up here. He's going with the pace. Most of the deliveries were slower. All of a sudden he generates space on one that we call the odd ball. The bounce isn't that much on offer again. It's keep. He plays it to sweeper of cover area. There is Tajamul Baba. Will just be 1. 135. For the loss of 3. Summer 5 of 5. Lefty 14 of 14. He's batting with a strike rate of 100. Lefty getting these
starts, but he's unable to convert. We have seen that over the past couple of days. He's developing that kind of a trend, and he has to develop a habit of converting these starts into substantial ones. People are coming in good numbers, and there is a good size of viewers who are going through different games. They're observing each and every batter, what they're doing. And that's again a good shot. There is going to be protection in the deep. Just a single. 13 done. It's 136 for the loss of 3. I was talking about that. People are there to judge you. They're going to come in with comments. They will talk about it in detail. That this lad is lacking here. Something is missing there. He has to be up to the mark. Develop that habit of scoring runs. The conversion is another important aspect. That is missing over the past couple of days. Amir lefty coming from that distant place of Northern Frontier District of Kupwara, and is unable to develop that habit. That's missing over the past couple of days. He has to adjust here. Make sense prevail, and should fire this time round, as his team is in desperate need of a victory here. They played 3, winning just a game. This one is going to be a must-win clash. Important one. Do or die. Now or never. 3 for 136. 42 balls are going to come. The first ball of fresh over. It is Samar Amin. Where is this one going? That's out of here for 6. On to the rooftop. And will it come back? Will it roll back onto the field? It's on to the rooftop. Nice pickup again. This man, the way he picked that one up, that is amazing from Samar Amin. The next one punched. He has got different shots in his kitty. The one we saw, nice pickup. The next one, that's a punch off the back foot. Fazil with a message telling him that pitch it around that patch. Let the striker face the heat. 137 for 3. That one driven but fine as Yashjeet. Amir is eyeing some big shots here. He has tried in between, but yet to succeed. And that one is going to be wide. Fazil isn't happy at all. He fired that one outside off. He's going with that side arm action. As I earlier given you that it's hard to pick sometimes. He's gone for 23, including that 6. That just deteriorated his figures, that disturbed his figures for a while. Square on the on. Jasmeet Nan is there. Nan picks it up, only a single, 146 for 3. Last ball of over number 14. This over 6, 7, 8, 9, 10 of it. From 5 balls, the last ball. And he's got a different style of playing cricket. He is standing tall. And sometimes, very rare from the batter, he's going to crouch low and keep it away. He's going to bend his back. Hardly you could see him bending his knees. He loves to stand tall and bringing his bat down in time with that much energy. On offer, 14 done. 3 for 148. Samar Amin lefty. Joining hands. They're playing their third game, both the teams. They played just two games. So they have won one and lost one. And that means they are in their third one. So better is to win this one at least. Don't put it for the fourth one. Don't think that we have one more match coming up and we will look to bounce back there. There is going to be immense pressure in that last league round robin stage game. So it's better to find a way here. Try to creep and climb. Be in a position where you can say that we do have 4 points and make sure that you seize an initiative.
While Nazir is trying to go through, I think Sumerbugh, it's their third game, but Al Samad, I think they played their 3 games. Is it their final game? We'll have to wait and watch. So, dear beloved listeners, bear with us for a while. We shall come up with that stat too. We have to maintain it here in the com box. We have to go through it. 148 for 3 after 14 overs. 36 balls are going to come. Amir Lefty is on 17 of 18. Samar is playing on 15 of just 9 balls. It's bright sunshine here. Humid climate. That gentle breeze which is infusing life into that. Yash will continue. There is a good flight on offer there. And he waits for the ball to come in close to the body. Then offered that shot. I think good move. Let the ball come in and let the ball turn into the batter. And he's going to simply come into your arc where you can swing your bat. You can swivel on its axis. 149 for 3. 15th over in progress. Yash in his third. He's looked good. But the economy is going to be concerning. And that's going to be the concern. There is a fumble. But the man is right behind to cover it up. That is Nasir Ghanai. He's also known as Nasir Bali. 150 is raised on the board at the cost of 3. Guldan Hilal colored. And the hero of the show in number first. In the first passage of 10 overs, that was Ishtiaq Robbie scoring invaluable 76. Unable to bring up his 50. That's a good shot straight down the ground. Big chase for 2 men. The man from long off and the man from long on. Sajjad Sultan parried it into the fence. These are going to be the runs. 4 of them. That 4 coming at crucial juncture. I think our cameraman lost his... oh, look at that. He was in all sorts of danger and bother there. And Shaukat. Al Samad is playing their last league round robin game. That's why. But one thing I'm going to tell you guys that I thought that it is the 4th game of Real Sultan Sumerbugh. But this is their 3rd one and they have one more match to come. And Al Samad is in their last league game. That means if they lose this one, they have to depend on other results and they have to look on other games. And if A wins, B loses, C wins, D, it's just like that. And that isn't going to be easy. They have to depend on other results in that pool of death. And the tight pool, it was Pool A where we saw Sultan versus Baramulla, Royal Goodwill, Sopor Stallions. They were all the big clubs. And with least experience, that was Spectrum Kings. They were having all the talented lads, but with least experience. And that cost them heavily and badly. But they're just going through that learning curve and they're trying to build that team, which is going to be a wonderful club in years to come. 156 for 3. That one, that's a good looking shot again. Will he beat the man? No way. He finds Tajamul Baba to perfection. Just a single. Still a good way to end the over. 1, 2, 6, 7, 8, 9 of it. 3 overs, 1 for 26. 157 for 3. 5 overs are going to come. 30 balls. What do you think? What do you have in store? Find it out in next 5 overs. We're into the death overs, the death phase. 5 tight overs. Is it going to be exciting game of cricket? Will batters rise to the occasion or bowlers find a way to cope up? Join us and find it out. एक बार फिर जो हमने जिक्र किया था 10 ओवर में 107 रन बना डाले थे. अगले 5 ओवर में 50 रन आए हैं पर 3 विकेट. और देखना होगा यहाँ से कितने रन यहाँ से टीम बटोर पाएगी, कहाँ तक पहुँच पाएगी. 16वां ओवर 5 ओवर का खेल यहाँ से. आमिर लेफ्टी और समर बल्लेबाजी में आपके पास विकल्प हैं पर कोशिश ज़रूर वो 190 क्या वहाँ तक पहुँच पाएगी. ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ पीछे फील्डर पर दूसरा रन पलट करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया. 2 ओवर खाते में रन संख्या 159 3 विकेट पे.
अल समद क्रिकेट क्लब का यह आखिरी मुकाबला। इससे पूर्व उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 2 में हार, 1 में जीत अर्जित की है। वो वहीं पे अगर समरबुक की बात करें तो उन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, 1 में जीत 1 में हार। ये उनका तीसरा मुकाबला है और अगला मुकाबला ग्लोबल डडू टाइटंस के साथ उनका होना है। वो आखिरी लीग मुकाबला होगा अपने पूल से। 159 पे 3, 16वां ओवर। आमिर सोफी का आखिरी ओवर 29 रन 3.3 ओवर में और पहले विकेट की तलाश। अच्छा अभी तक ये खेल चला है। ये बड़ा स्ट्रोक समर के बल्ले से, कनेक्शन भी सही और गेंद सीधे स्टैंड्स में। एक और छक्का समर के बल्ले से निकलने वाला। उस छक्के के साथ ही वे पहुंच गए 23 पे और कुल रन संख्या 166। 16वें ओवर में 3 विकेट पे अल समद क्रिकेट क्लब खूबसूरती के साथ स्पॉट से गेंद को पिक किया और बड़ा स्ट्रोक था ये समर अमीन के बल्ले से निकलता हुआ। 6 और खाते में 23 पे समर अमीन, 12 गेंदों से आमिर लेफ्टी 27-25 गेंदों से 166 पे 3, 15.4, 10.60 प्रति ओवर के हिसाब से प्रोजेक्टेड को 212। आमिर सूफी इस ओवर में 9 रन खर्च कर चुके हैं, 2 गेंदों खाना बाकी। कुल उनकी गेंदबाजी विशेषण 3.4 ओवर 35 रन। कोई मेडन नहीं, कोई विकेट अभी तक उन्हें मिला नहीं है। राज्य खर्चीले साबित हुए हैं आमिर सोफी। समर और आमिर लेफ्टी बीच मैदान में और कोशिश जरूर होगी। विकेट्स आपके पास सुरक्षित हैं, 7 विकेट सुरक्षित हैं, तो एक बड़ा लक्ष्य यहां पर खड़ा करना जरूरी है। कनेक्शन सही था तो जल्दी जरूर स्ट्रोक खेले, वो बल्ला जल्दी घूमा जरूर था, स्ट्रोक के पीछे ताकत जरूर थी, तो 6 रन जरूर मिले। 166 पे 3, 15.4, 2 गेंदों का ना बाकी इस ओवर में। उसके बाद 24 और गेंदें, 26 गेंदें बची हैं पहली पारी में। 16वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट राइट प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 166 पे 3, 2 गेंदों का ना बाकी। समर सामने 23 पे 12 गेंदों से करीब करीब 200 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट। यहाँ फिर डाउन द ट्रैक ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, सीधे फील्डर के पास नासिर का नहीं तैनात। गेंद को फील्ड तो कर लिया पर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 166 पे 3, अंतिम गेंद का आना बाकी। आमिर सोफी 35 खर्चे हैं। ये बेहतर स्ट्रोक है गैप में, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। एक और चौका समर को मिलता हुआ और टीम अल समद को मिलता हुआ। 27-14 गेंदों से समर अमीन। कुल रन संख्या 170 पे 3, 16 की समाप्ति। 4 ओवर का आना बाकी और निश्चित तौर पे 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने में सक्षम होगी टीम, तो फिर 40 और जोड़ सकती है और 210 तक पहुंच पाएगी। और इस विकेट पे सर्वाधिक स्कोर 210 यूनाइटेड इंपोर्ट्स का है, उसको भेजना। हालांकि दूसरा जो न्यूनतम लक्ष्य है वो 208 का है और वो भी यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने ही संभवतः बनाया था अथवा रॉयल गुडविल ने, ये देखना होगा। आमिर सोफी 4 ओवर समाप्त उनके, अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। 39 रन उन्होंने खर्चे, विकेट अभी तक उन्हें मिला नहीं। 170, 3 विकेट पे। विकेट आपके पास सुरक्षित है, 7 सुरक्षित है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा यहाँ पे समर और आमिर लेफ्टी पे। और खुलकर स्ट्रोक खेलने का प्रयास। 14 से 27 समर, 25 से 27 आमिर लेफ्टी। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने 27-27 रन बनाए हैं, पर अंतर यह है कि 14 गेंदों से 27 समर ने बनाए हैं और वहीं पे 25 गेंदें खेली हैं 27 रन बनाने में आमिर लेफ्टी ने। 170 पे 3। सोपोर स्टैलियंस दूसरी टीम है जिन्होंने 210 के बाद 208 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया था पहली पारी में। वो दूसरा बड़ा लक्ष्य है इस विकेट पे, और क्या उसको पार कर पाएगी आज अल समद क्रिकेट क्लब की टीम, क्योंकि 4 ओवर आने बाकी, 7 विकेट सुरक्षित। 170 पे 3 और यहाँ यश जीत का इस्तेमाल। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, देखा बाला, छोड़ा विकेट कीपर के लिए, वाइड का इशारा बलविंद्र कुमार सोनी का। एक सिंगल और खाते में। 171 पे 3, 17वां ओवर। पारी का तेज धूप, अच्छा तापमान, बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला। पहली पारी 16वें मुकाबले की अल समद की टीम आज बल्लेबाजी कर रही है। रियल सुल्तान ने उन्हें आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पे। नासिर का यूसुफ तैनात हैं। यशजीत 3.128 और 1 विकेट। ये उनका आखिरी ओवर है कोटे का। 17वां ओवर पारी का 172, 3 विकेट पे। रियल सुल्तान समरबुग की टीम
चाहेगी कि कम से कम लक्ष्य तक रोका जाए। वो 200 से अधिकतम का जो लक्ष्य होगा, 200 प्लस का जो अतिरिक्त दबाव होगा, उससे बचा जाए। और क्या उसमें सक्षम हो पाएंगे, क्या यहाँ रोक पाएंगे, ये देखना होगा। सही दिशा और लंबाई के साथ साथ सही लेंथ पे आप गेंदबाजी करें, ये बेहतर गेंद है। ये तेज गेंद आमिर लेफ्टी ने प्रयास जरूर किया, क्योंकि अब आमिर भी जानते हैं कि रन गति को बढ़ाना अवश्य है। आखिरी ओवर्स चल रहे हैं, यहाँ पर अपने आप पे संतुलित होने के बाद, अपने आप को संतुलित करने के बाद आक्रमण करना होगा, गियर्स बदलने होंगे समर और आमिर लेफ्टी को। इस बार समर के बल्ले से ये जाएगी सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर। एक और छक्का समर के बल्ले से, वो 33 पर पहुंच गए 16 गेंदों से। कुल रन संख्या अल समद क्रिकेट क्लब की पहली पारी के आधार पर, और बेहतर स्ट्रोक था, खूबसूरत ये स्ट्रोक और समर की ये क्षमता। 178 पे 3, 16.3 के बाद यश जीत समर के लिए। फिर समर ने उड़ाया, पर इस बार फील्डर उस ओर आ रहे हैं, पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। 1 रन और पिछले मुकाबले में भी अच्छी पारी खेली थी समर ने। बेहतरीन और शानदार उनका फॉर्म रहा है इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में अपनी टीम अल समद क्रिकेट क्लब के लिए। 34 पे सामने 28 पे आमिर लेफ्टी, 200 के स्ट्राइक रेट से समर 34 पे। 179 पे 3, 16.4, 2 गेंदे 17वां ओवर, बड़ा लक्ष्य पर 190 चेज हुआ इस विकेट पे। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन की ओर खेला नासिर गनई के पास, और पहले प्रयास में फंबल, दूसरे प्रयास में गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, पर 1 रन जरूर। अंतिम गेंद का आना बाकी 17वें ओवर में। 180, 16.5 के बाद अंतिम गेंद यशजीत, 3.5 ओवर 36 रन। अरे यशजीत इस बार पे एरो, गेंद हाथ से टकराई जरूर, सामने की ओर 23 स्ट्रोक जरूर था। निश्चित तौर पे आसान नहीं रहता है स्ट्रोक को वहां पर कवर करना। 1 रन जरूर। अंतिम गेंद पर सिंगल, 17 समाप्त। 181 पे 3, आमिर लेफ्टी 29, समर 35। यशजीत ने 4 में 37 खर्चे, आमिर सोफी 4 ओवर पूरा कर चुके हैं। नासिर गनई के अभी भी संभवतः 2 ओवर शेष हैं, और वही उमर आलम के 2 ओवर, और उसके अलावा अन्य गेंदबाजों के ओवर्स बचे हैं। तो यहाँ पर 3 ओवर की गेंदबाजी अब शेष है। 181 पे 3, 17 के बाद नासिर गनई का एक बार फिर चयन किया गया गेंदबाजी में। इससे पूर्व उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 1 विकेट उन्हें जरूर मिला है। ये सामने विजुअल्स, छोटे बालक क्रिकेट का मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए, क्रिकेट का उत्साह, क्रिकेट का जुनून हर सो देखने को मिल रहा है। हवा में, फिजा में हाथ लहराते हुए, और निश्चित तौर पे एक खूबसूरत विजुअल्स हैं। और बमुश्किल अपने आप को बचाया वहां पर। पीछे फील्डर जरूर थे, सामने खेला था, 3 स्ट्रोक था, ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया था स्ट्रोक के पीछे समर ने। 181 पे 3, 17 समाप्त। 18वें की शुरुआत। नासिर गनई, छोड़ बदला गया है, और अब साउदर्न पवेलियन एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। सामने समर अमीन, पहली गेंद, स्वागत इस पहली गेंद पर नासिर गनई का। सेंट्रल पवेलियन नॉर्थ, वहां जाकर गेंद ने टिप्पा खाया, वहां जाकर के गेंद लगी है, और ये एक और छक्का समर के बल्ले से। आज उन्हें बल्लेबाजी में प्रमोट करके नंबर 4 पे उतारा था, और क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। थोड़ा सा शफल किया, गेंद की लाइन के ठीक पीछे आए, बड़ा स्ट्रोक, और 6 अर्जित किया अपने लिए अपनी टीम के लिए यहाँ नासिर गनई के विरुद्ध समर अमीन ने। 187। इस बार खेला जरूर था, पर गेंद बल्ले से टकराने के बाद पैड से टकराई, वही पास में लौटकी, रन तो मिलेगा नहीं। 17.3, 187 पे 3, अल समद क्रिकेट क्लब। समर 41 पे मात्र 20 गेंदों से, 29-27 गेंदों से आमिर लेफ्टी। नासिर गनई 2.2 ओवर 20 रन, 1 विकेट, 6 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं। पहली गेंद पर छक्का उनके विरुद्ध समर अमीन ने। एक बार फिर समर सामने, यहां एक सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में, और 1 रन से ही संतुष्ट। पीछे फील्डर तैनात जरूर। 1 रन और खाते में। 188, 3 विकेट पे 17.3 ओवर की गेंदबाजी। 3 गेंदे इस ओवर में, 2 अगले ओवर, 15 मात्र गेंदे बची हैं पहली पारी में इस 16वें मुकाबले में जेके सुपर सुमिट रेड प्रीमियर लीग।
2025 second edition presented by Athwas Retail, Athwas with confidence. 188 पे 3 सामने आमिर लेफ्टी, फुल टॉस सीधे फील्डर के पास पर रन जरूर मिल जाएगा। 1 रन और खाते में। 189, 3 विकेट पे 7 सुरक्षित हैं, तो विकेट का दबाव नहीं है यहाँ पर बल्लेबाजों पे। आमिर लेफ्टी 29 पे, समर लगातार प्रहार कर रहे हैं, विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी आक्रमण कर रहे हैं गेंदबाजों के विरुद्ध, उसमें सफलता भी मिली है। इस ओवर में 3 से 7 आए, 8 आए हैं 4 गेंदों से। नासिर गनई 2.4, 22, 1 विकेट। 189 पे 3 बोल्ड कर दिया यहाँ पर समर अमीन को, सीधी स्टंप्स पे गेंद यॉर्कर लेंथ की, और वहां पर कुछ कर नहीं पाए। समर अमीन साफ बोल्ड होकर के वापस लौटे, पर एक बेहतरीन पारी खेली 41 रनों के, चौथे विकेट के रूप में मैदान से बाहर। 189 पे चौथा विकेट गंवाया है अल समद क्रिकेट क्लब ने। और खूबसूरत, शानदार, बेहतरीन आवश्यकता के गलियारे में वो साफ बोल्ड किया वहां पर समर अमीन को। अंततः 41 रनों की यह बेहतरीन पारी खेलने के बाद वापस लौटे चौथे विकेट के रूप में। 189 पे 4, 17.5 ओवर की गेंदबाजी अल समद क्रिकेट क्लब। Has played his part. These are the security personnel there. And that brings Roopmeer. He comes out to bat. He walks in. Let's Kittle over there. And this is the young generation. They're enjoying the match here at this beautiful venue of Bakshi Stadium. These are the visuals coming your way. They're under the shade. Take a look from one end to the other end. Little smile. Very smile on their face, and looking tired, bit tired at the moment. But the second one this evening, that will tire them up in reality, because we have Royal Goodwill on one side, on the other side we have Sopor's Talents. It's going to be Parvez Rasool in action, and on the other side is going to be Ishtiaq Rasool. What a fight, a game to watch out in Pool A, and this pool is now wide open, and it becomes pool of death. 189 for 4. 13 balls remaining. One last time in this over. Where is Roopmeer going? Roof shuffle across. Aerial he goes. There is a man. And he's safe there. No problem at all. Yes, Jeet cuts it off. He will keep the strike for the next over. 12 balls are going to come. 190 on the board. That means they have an opportunity to put on more than 200 on the board against the likes of the real Sultan Sumerbugh team. 4 down, 189. What an innings from Samar Amin. He scored invaluable 40 and was cleaned up by Nasir Belli with that beautiful Yorker. He Yorkered him twice in an over, but the second one that went right, that just gone through beneath the bat. These are the pictures on your screen. Lot of things going on. Yesh bowled out his quota. He gone for plenty today. And Sajid is given the ball again. He's going to bowl from Southern Pavilion end. One man who set things ablaze in a perfect way. That was Ishtiaq Ilahi Robi, scoring 76 invaluable runs once again here. The second 50 of the tournament for Ishtiaq Robi. At one stage it looked like that he will bring up his 100. But in the very next moment, he lost his shape all of a sudden. Got overcautious and handed his wicket, gifted his wicket. And Sajid, 2 was none for 21. Little brain fade from captain. He can't bowl 4 overs in today's match. He's going to finish his quota with that. Just third over that, the fresh over, the first ball. That's gone flat for 6. Sajjad Sultan can't plug that one. Can't keep this one within the boundary line. Sajid Dari is unhappy, and Sajid can only bowl 3 overs in today's game. That's his final over. It's the second last over of inning number 1. He was eyeing a Yorker, and Roopmeer is there to dispatch it. Aerial and up and over into the longer boundary. First ball 6. Here is Sajjad again. Straight drill down the ground. They're going to look for 2. Are they going to push for the second? Looks like could be tight, but he's back to the safety of crease. Just a single. 197. 2 balls yielded 7. A 6 and a single. Pressure will be on Sajid. He's gone for 27. He's gone for 28 of his 2.2. 14 balls. He conceded 28. That means economy of more than 12 here. What can he do now?
more than 14, as he has bowled just 2.2. The next one to Amir, and Amir makes that sure it's going to run down to the backward a point area. Fielded in pursuit. Hinan does well. Quality stop by Hinan. Keeps it down to 2. What could have been a boundary, just inches inside the boundary line. He does mop up in style. 199. Al Samad batting first against the real Sultan Sumerbugh. Just one share of team's double 100. Amir lefty 32 of 29. Now he has to launch big. There is no pressure at all. Pressure is absolutely gone. At one, he was trying to carry it through the offside and is beaten with that Yorker one. And Sajid has that ability. He can york him up. He's going to keep the batter on his toes. Is he going to do that in next 2 balls? He has to do that badly here. Gone for 30 off his 2.4. And he was also expensive in today's game. He's got 2 balls left in his quota. 2.4 gone for 30. What can he do now? Amir on strike. Amir comes forward onto the front foot. And that one will race down to the backward, a point boundary for 4. He closes the bat face, but still gets 4 for that. It's 200 up. It's 203 for the loss of 4 into the 19th over. And take a look again. He closes the bat face early, but gets what he desired, what he wanted. Of the outside edge, and it runs down towards backward a point. He was trying to flick it round the corner. He gets what he desired, what he wanted, and they needed that boundary. It's 203. They crossed the mark of 200. Sajid 34 wicketless in today's match. Last one makes room. Chase for Hinan. Hinan is there to stop the ball. He will keep the strike. 204 for 4 after 19 overs. Another eventful over. 6 for 10. 11, 13, 14 of it. Another big over coming at the fag end. We've got just 1 over to go. Thanks to the sponsor of JG Sports Time, Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Pampur, MHM multi-brand. But if we want it, then we got H&D Complete Kids Wear near Natipura, Srinagar, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters, and the Just Bukhara. Someone special, Valley Fresh Cold Chain is the newly one induced. It's 204 for 4. Last over. 6 balls. Pressure will be on bowling unit. What the 2 men gonna do now? It's a lefty and righty in the middle. Roopmeer and Amir lefty. Lefty for the first time scoring 37 in this tournament. That's their final game in the pool stage. Here is Nasir Ganai to finish the quota. First ball. Straight into the hands, and Yaji takes that one. Was an easy one. It was a free flow. Extension of arms. And Yash makes sure that it's going to land in safe hands. He's taken. Quality catch. Brilliant goal by Yashjeet. And Nasir gets his man. Look at that one. He comes forward, skips down the track, finds his man. And Yash, look at that. No more celebration. And it's wicket down here. Amir lefty. Set batter has to leave. He's going to go back to pavilion. It's 204 for the loss of 5. 5 balls remaining. They need 10 to 15. And it's going to be Junaid Bashir in at number 7. Yesterday couldn't do wonders with the bat. Today he has to do something special. 204 पे 5-5 के दे बच्चे हैं और 210 जो यहाँ सर्वाधिक स्कोर है यूनाइटेड इंपोर्ट्स का किसी भी टीम द्वारा इस प्रतियोगिता में, क्या उसको पार कर पाएगी हाल सबत की टीम, ये देखना होगा क्योंकि 204 तक पहुंच चुकी है। 5 के दुकान है बाकी। नासिर गनई को पहली गेंद पर विकेट मिला, वो खूबसूरत कैच पकड़ा वहां पर खिलाड़ी ने। 3.1 ओवर में 23 रन देकर के 3 विकेट नासिर गनई को। बेहतरीन गेंदबाजी जुनैद बशीर, सामने नए बल्लेबाज अल सबत के लिए। 204 पे 5, 19.1 ओवर की गेंदबाजी। दूसरी गेंद लेकर के नासिर गनई साउदर्न पवेलियन एंड से, सामने जुनैद, और जुनैद ने खूबसूरती के साथ इस गेंद को उठा दिया और गेंद सीधे स्टैंड्स में। एक और छक्का। 210 पे 5 उस स्कोर की बराबरी कर दिया है। यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने किसी भी टीम द्वारा सर्वाधिक स्कोर इस विकेट पे बनाया था। जेके सुपर सीनियर रेड प्रीमियर लीग का सर्वाधिक स्कोर किसी भी टीम द्वारा 210 यूनाइटेड इंपोर्ट का बराबरी हो चुकी है इस मैच में। अल समद क्रिकेट क्लब द्वारा 210। जुनैद ने आते ही छक्के के साथ स्वागत किया वहां पर नासिर गनई का। 210, अभी भी 4 गेंदों का बाकी। एक बार फिर बेहतर स्ट्रोक, 1 रन के लिए दौड़ पड़े और पीछे खिलाड़ियों। कमाल का ये कैच साजिद डार द्वारा, शानदार कैच लपका है सबब थे। अरे वहां पे जुनैद बशीर भी चौंक गए इस कैच से। ये देख लीजिए,
खूबसूरती के साथ उड़ाया था, काफी ऊपर हवा में गई थी गेंद। और यहाँ ये कमाल का कैच, बहुत ही बेहतरीन संतुलन बनाए रखा है साझेदार ने। और ऐसे में जुनैद वापस लौटे, 6 रन बनाए, 2 गेंदों का सामना किया। इस समय रन, ओह कमाल का कैच था, इस एंगल से देखा जाए खूबसूरत। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे समय में उल्टी दिशा में जाकर के संतुलित बनाए रखना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी और शानदार बढ़िया एफर्ट रहा इस खिलाड़ी द्वारा, साजिददार द्वारा। कैच कॉल आपका, पारी हो गई समाप्त। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे विकेट। नासिर गनाई को इस ओवर में 2 विकेट, 3.3 ओवर, 29 रन, 4 विकेट, 210 पे 6, 19.3, 3 के दुकान बाकी इस आखिरी ओवर में। पहली पारी जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकेंड एडिशन, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और यहाँ आखिरी 3 गेंदे, बड़े प्रहार जरूर होंगे बल्लेबाजों द्वारा। रूप मीरा 8 पे, आज इश्तियाक रॉबी ने 76 की पारी खेली, समर अमीन ने बेहतरीन आक्रमण किया, गुलडान ने भी कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेले, एक अच्छी पारी खेली। तो कुल मिलाकर 210 तक पहुंच के एक विशाल लक्ष्य, पहाड़ जैसा लक्ष्य इस विकेट पे कहा जा सकता है। दूसरी पारी में रियल सुल्तान समरबुक के लिए आसान परिस्थितियां रहने वाली नहीं है। जिया अली नए बल्लेबाज सामने, 19.3, 210, 6 विकेट पे। ऐसे में अगली गेंद जिया के लिए खेला जरूर, अंदरूनी भाग लगा, 1 रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन और खाते में। रूपमीर सामने रहेंगे, सर्वाधिक स्कोर इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में। अल समद क्रिकेट क्लब ने 210 को पार कर लिया है। इससे पूर्व 210 यूनाइटेड इंपोर्ट्स का 211, अल समद 6 विकेट पे 19.4 के बाद। The first inning best score belongs to Al Samad now. That's 211. Earlier best was 210. Penultimate ball. It stays low. Too low. Unable to pick that one. Roopmeer is talking about that. What can I do? It kept low. Too low. It just rolled on the surface. The last ball is going to come. He's gone for 30 and picked up 4 wickets. Nasir Ganai in today's game. The last ball of inning number 1. Here is Nasir. He comes forward onto the front foot. There is Jasmeet Nan, just a single they finish on. 212, 213 is going to be the target for Real Sultan Sumerbugh team. We shall be back with the chase. Join us for the chase in a while. Till then, Assalamu alaikum and fi amanillah.
Assalamu alaikum and welcome again. It's warm afternoon here at Bakshi Stadium. 213 is going to be the target for the Real Sultan Sumerbugh side to prevail, and it's important game for both the teams, but more important, and it's going to play pivotal part if Al Samad manage to win this one. If they walk away unhurt from this game, and if they take away 2 invaluable points, that will make their journey easy in rest of the games. On the other side, if we talk of Real Sultan Sumerbugh, they will try to extend their domination. They will try to win this one and walk away with 2 more invaluable points. That will make 4 points for the Real Sultan Sumerbugh side in the tournament. Who's going to open the attack? It looks like Shahid Khan is going to continue, and they're happy with their prime pacer. Was bowled really well in the last game, picking up 4 wickets. Yesterday evening, that was a great show from young lad with the ball. Their side can't walk away unhurt. They were unable to take away 2 points. It was Global Dudu Titans. They prevail in the end. That was a must-win game. And the way they kept Al Samad away from that game, that was so nice at the fair end. They held their nerve to go on and clamor 2 invaluable points. Ishtiaq Robbie is having a word with Shahid Khan, and there is captain who joins them in that kind of a little hurdle. Now disperse it out. Robbie, who was rotating his bowlers yesterday. That was well an effort from Global Dudu Titans. They were dictating terms and they took the game away. Hinan is on strike. He's warming up a bit, and he's got Tajamul Baba, the man who has hit Meshati number of 6 in the tournament. 10 of them under his belt. He's got the highest number of 6s. Robbie is having a word with Tajamul there. As Hinan is getting ready, he's got a slip in place. Roop Mead is there. There is going to be a man at short, fine leg. Mid on is in play, Junaid Bashir. Mid off, there is Adil Gultan. 1 man at scale boundary. The 1 boundary rider is on the onside, and 1 is going to be on the offside. Where he is, we're going to find it out with the passage of time. Where is the other boundary rider? But with this field, Hinan will take strike. We are ready with the chase. Ball 1. Shahid Khan, little moment, and Hinan right inside the line, trying to keep it away, trying to lay bat onto the ball. He was trying to just keep it away, press it away, but saw that there is an outward moment, kept himself little away from the line of the ball, lets it go. He was watchful on that occasion. It's none for none in over number 1. The required rate from the very bird go is 10.74. It's more than 10. Shahid once again. This time gently done. Not for runs. He's going to read the surface. He's going to look into it. And we'll try to find a way how to get off the mark. Why to find those runs, those crucial runs of the bat straight away. As it's none for none. Mammoth 213 up for grabs. More important 2 points. This time trying to flick it. Bat rolled in his hand for a while. It would have been a quality flick shot. Risky one, but didn't time it to perfection. Couldn't execute his plans. It's none for none after 3 balls. 3 dots straight away. Tajamul Baba. The other day that was a blistering knock, but today he has to do that. He has to replicate that one again here. Next one beautifully bowled again. Now there is outward moment and extra bounce. Hinan is surprised. He would like to have a word with his partner. He walks up to Tajamul. Now look, they are looking onto that portion. I think these are the areas of concern where the pitch is breaking a little bit. They're trying to press these areas, and ball hitting that area which is full of cracks. And there was an bounce and deviation to surprise the right-hander Hinan. One more time, fuller one this time to mid on, directed needed.
No problem there. Junaid is a bit late to respond. He's known for his good fielding skills. Can't keep that single away. Can't prevent. Unable to stop the two batters as they scamper through. Hinan is up the mark. He used 5 balls to find that single at mid-on. It took him 5 balls. Lot of time inside the first over. Tajammul for the first time will find the likes of Shahid Khan. Does well. Ball holding its line and Tajammul guided it with that angle blade. Dabs it away. 1 gone. It's 1 without loss. 212 behind from 19 overs. अस्सलाम वालेकुम, स्वागत आप सभी व्यूअर्स का दूसरे पारी में जे के स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और रेड एफएम जे के यूट्यूब के माध्यम से दूसरी पारी 213 जीत के लिए पहले ओवर में 1 रन। अच्छा ओवर शाहिद खान का, शुरुआत बेहतर और नपीतुली गेंदबाजी। तजम्मुल बाबा 1 गेंद 0, खाता खोलना बाकी। हिनान मलिक ने 5 से 1 रन बनाया है। 11.16 शुरुआत में रिक्वायर्ड रन रेट। द रियल सुल्तान समरबुग एक बड़ा लक्ष्य चेज करना है, 213 रन बनाने हैं 20 ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। 1 रन बना है 19 ओवर में, अब जाकर के 212 रन और चाहिए। तो एक टफ चुनौती, परिस्थितियां काफी मुश्किल, पर इन मुश्किल परिस्थितियों में आप किस प्रकार का प्रस्ताव रख पाएंगे सामने गेंदबाजों के, ये देखने वाली बात होगी। 1 ओवर की गेंदबाजी में एक दूसरे छोर से रूफ मीर एक और ओवर लेकर के, ये पहला ओवर उनका और दूसरा ओवर पारी का अल समद के लिए। गेंदबाजी रूफ मीर के पास, पहली गेंद रूफ मीर की। इस बार थोड़ा गति परिवर्तन किया जरूर था, पढ़ लिया वहां पर बल्लेबाज ने। ऑन साइड में खेल करके दौड़ पड़े सिंगल के लिए। 1 रन और खाते में, 2 बगैर नुकसान के। 1.1 ओवर की गेंदबाजी और अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है। शुरुआत अभी अभी हुई है जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकेंड एडिशन, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। मैच नंबर 16, 2 रन बने हैं 1.1 ओवर की गेंदबाजी में। रूप मीर अगली गेंद इस बार पड़ने के बाद नीचे भी रही और हल्का सा कोण भी बदला ऑफ स्टंप के आसपास। ये गेंद तजम्मुल बाबा जो कि खड़े खड़े ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, और उनकी रेंज पे गेंद तो फिर सीमा पार ही पहुंचाने में सक्षम हो गए। तो आत्मविश्वास गेंद की पिच तक पहुंचना और वो उछाल अभी तक प्राप्त नहीं हुए, पर यहां कनेक्शन सही तजम्मुल बाबा के बल्ले से। पीछे फील्डर, 1 रन जरूर मिल जाएगा तजम्मुल बाबा और हिनान मलिक को। और पिछला मुकाबला 10 विकेट से जीता था तजम्मुल और हिनान ने। बेहतरीन पारी खेली थी, अपनी टीम को 10 विकेट से जीत अर्जित की थी। 1.3 के बाद 3 बगैर नुकसान के। द रियल सुल्तान समरबुग बनाम अल समद क्रिकेट क्लब, ये 16वां मुकाबला। एक आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट, उसके अनुकूल रूप मीर को गेंदबाजी करनी होगी। हिनान मलिक सामने 2 पे, अभी तक 6 गेंदें खेली है। मलिक ने इस बार मुश्किल अपने आप को बचाया, पर गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। चौका मिलता हुआ 4 और खाते में। हिनान मलिक के बल्ले से निकलने वाला यह चौका, बल्ले के निचले भाग पे जरूर गेंद लगी थी, पर चौका फिर पे और बाबा ने अपने आप को बमुश्किल बचाया जरूर। पर 4 और खाते में, 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि। रन संख्या द रियल सुल्तान समरबुग 7 दूसरे ओवर में। मलिक 6 पे, बाबा 1 पे नाबाद नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे। रूफ मीर एक बेहतरीन गेंदबाज है, पर क्या विकेट दिला पाएंगे? और यहां अंदरूनी भाग लेने के बाद गेंद संभवतः स्टंप से जा टकराई और रूफ मीर को सफलता मिलती हुई हिनान मलिक का विकेट मिलता हुआ रूफ मीर को 7 पे पहला विकेट गंवाया है अल समद के विरुद्ध रियल सुल्तान समरबुग ने। और एक बड़ी विकेट मिलती हुई हिनान मलिक की अल समद क्रिकेट क्लब को। रूफ मीर एक बेहतरीन दिग्गज अनुभवी गेंदबाज, और ये अंदरूनी भाग और बल्ले को निचला भाग लगने के बाद गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई और प्ले डाउन होकर के वापस लौट रहे हैं। दुर्भाग्य द रियल सुल्तान समरबुग के लिए, पर शुरुआत खराब यहाँ बल्लेबाजी द्वारा, और शुरुआत में ही वो विकेट गंवा बैठे। क्रीज से बाहर जरूर खेले थे, गेंद की पिच तक पहुंच, थोड़ा वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास, चतुराई के साथ ये गेंदबाजी।
रूपमीर की। और अब जाकर के नंबर 3 पे देखना होगा तजमुल बाबा के साथ किस बल्लेबाज का चयन किया जाएगा। हिनान मलिक बोल्ड रूपमीर, एक चौका लगाया और आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। 7 पे 1.5 के बाद रूपमीर को पहली सफलता अपने पहले ही ओवर में 6 रन दे करके। शुरुआत बेहतर और वो विकेट, वो ब्रेक तो शुरुआत में ही दिलाया जिसकी की आवश्यकता थी अल समद क्रिकेट क्लब की टीम को। भाभा पे अब निर्भर करेगा। और अब जाकर के नंबर 3 पे फाजिल रशीद। पिछले मुकाबले में उनका उतना योगदान रहा नहीं था, पर आज आवश्यकता है टीम को और एक बड़ी पारी खेलनी जरूरी। तजमुल बाबा और फाजिल रशीद को, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक पार्टनरशिप जरूरी है इस समय। द रियल सुल्तान समरबुग को 1.5। आखिरी गेंद हो गई इस ओवर की। ये पारी का दूसरा ओवर और अल समद को शुरुआत में ही विकेट मिल चुका है। रूपमीर ने वो सफलता दिलाई है इस 16वें मुकाबले में। आमने सामने अल समद क्रिकेट क्लब और द रियल सुल्तान समरबुग। इसके बाद एक और मुकाबला, दिन रात्रि का वो मुकाबला होगा, डे नाइट मुकाबला अंडर लाइट्स खेला जाएगा। सोपोर स्टैलियंस बनाम रॉयल गुडविल, एक और कांटे की टक्कर, एक और बड़ा मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला। अपील जोरदार की जा रही है पर उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। अंपायर रवि कुमार चौरसिया ने स्वीकार नहीं किया। अंतिम गेंद पर रन नहीं, कोई क्षति नहीं। ओवर की समाप्ति 2 समाप्त 7 पे 1। द रियल सुल्तान समरबुग। Roof has got that experience. Inside is edge is the only way to get away with that one, to survive early scare. Roofmeer is a bit annoyed. You can see that his response and reaction. His face is telling us the story. It just summarizes what he wanted is not given. It's 7 for 1 after 2 overs. Tight over. Successful over from Roofmeer. Brilliant one. The first over, Shahid Khan conceded a single. Second over, where we saw the back of Hinan Malik playing away from the body. And that's the reason that played on. And they chopped on. We saw the later on that occasion, there was a big space. And there was a gap between the body and the bat. Good delivery. Better line. Baba inside the line of the ball, dabs it away, dropping his wrist. Good way to keep it away. We're talking about that Hinan Malik playing away from the body, leaving a big gap. Couldn't time and can't put that one away in style. And that gap between the bat and the body, that was the reason. Couldn't transfer the weight, can't middle it properly. 7 for 1. With a lone slip in place, that one stays low. Not a clean stop. Needed a directed on the other side to make it happen. To make things happen. Fazil Rashid. He struggled and Samar Amin is in deep end. And I still remember yesterday game where Samar scored those quick runs. Then he got injured. I think he has pulled that side strain. That is going to be the problem. Looks like he's having that problem with that left leg. You can see that he is in deep end. He needs someone to help him. Now look at his resilience. He's limping. Now he's having some issues with his left shoulder now. Looks like that ball and socket joint has pulled a kind of injury or something else. Muscle cramp, maybe. 7 for 1 after 2.2. We are in over number 3. Samar again scoring invaluable 40 with the bat. Now he's got a role to play behind the stumps there. Physio is there finally. He walks out. And he's going to look into this one. He would surely going to check his left arm there. And Samar is having some problem there. It was like that. Ouch. Look now. There is a person who's giving him some sort of treatment and telling him that you will be okay in a while. A kind of cream applied on his left arm there. 7 for 1 after 2.2 balls. Bright sunshine. Beautiful pictures. Little attendance this afternoon here.
The love for the game is of next level. It's growing nowadays, and day by day in Kashmir Valley, and people are coming from different parts of the valley to witness different games here at this iconic venue. That one clipped away. Call is for two. Should get with ease. There isn't any close infield. There is the direct hit, and Baba wanted third. But that won't be easy. Would have been a risky one, and he decided against it in the end. 9 for the loss of 1. Al Samad Cricket Club set 213 for the Real Sultan Sumerbugh team. We're having some of the big names, heavyweights in the lineup. They lost Hinan early today. Hinan and Tajamal Baba. They created a record by chasing that 121 without losing a wicket. The two openers chased down the target other day. Plays it to long on. Rotation is going to be important. Ones and twos will ease up things. Will relieve that pressure. 10 for 1 after 2.4. As we are in over number 3, Muzaffar Tele is here. As we watch Shahid Khan again with a lone slip in place. Good looking shot, but straight to the fielder there. Straight to the fieldsman on offside. Would have loved to break free. Fazil Rashid. I saw that 100 coming somewhere in South Kashmir. After that, we haven't seen something substantial. What we call amazing knock or a remarkable one. 10 for 1 after 2.5. Asking rate is climbing. It's going to touch 12. Will it get there? Little back away. Fumble there, but no run taken. It's 3 gone. 10 for 1. The Real Sultan Sumerbugh team chasing mammoth, huge, and a magnanimous total of 213. It's a monumental chase. If they get there, that's going to be quite some achievement. They need to set that benchmark. Can they set the standards very high? Are they going to do that in today's game? Will they be able to chase it down? As 3 overs done, tight overs in the beginning. Tough phase continues. Can they break free? They need that at this very crucial juncture. 3 tight overs, just 10 on the board for the loss of 1. Hinan gone back to hut. Baba is getting ready to face the likes of Roof Mead. Very effective, proactive with the ball. First over, it's gone for 6. Fresh over first ball, and Baba was eyeing a big shot straight away. But Troopmeer is having a word, a little gaze at Tajamal Baba. Now Baba is just trying to understand what he's doing. He's mixing it up. He's rolling fingers over the ball and is coming up with those slow ones. Trying to understand what he's doing. Is he going to read it out of the hand? And sometimes you have to read it out of the surface of the pitch. Wanted a single, little wide. Good running between the wickets. 11 for 1. Batters need to make that kind of adjustment here. Apply themselves to the conditions here. Good batting conditions. And if we talk of the bowling unit, if you have a quality bowler in your lineup, he can make the batters toil hard. Now step out from Fazil Rashid. He opened his account. It took 4 balls to get underway. That tells us how effective the Pacers have been and are looking at the moment. Al Samad bowlers are keeping things tight. They're bowling in the right areas. Next one down the leg side. Will it roll past? It could be tight. Directed needed. Missed the target again. He was safe. No problem there. 13 for 1.
Now they are 200 behind. Exactly, they need 2-0-0 to prevail and win this one. That's a good looking shot, but that is gonna go straight to long off field. Just a single, 14 for 1. 199 behind from 16 overs. One ball remaining in this over. They are 199 behind. Behind square 1, 2, 3. 4 men behind square from onside to from offside to onside. That one stays low again. What can Baba do? Tall, lanky Baba has no answer. Roopmeer is having a word. He's passing on comments. And Baba is standing still. As he's surprised with that one. That didn't rise. That capped low. 4 gone. 1 for 14. They are chasing 213. The second game for today, we have Sopor Stallions taking on a Royal Goodwill. That promises to be crackerjack of a game coming your way this evening. Stay tuned, stay connected. And those who want to buy the ticket, where to find it, how to buy it, log on to www.district.in and you can easily avail the ticket there and be the part of the second game, which is going to come your way 6 p.m. onwards. 14 for 1, 4 done. JK Super Cement, Red Premier League Season 2, Banai Mazboot Imarat, Build Strong Kashmir. Presented by Athwas. Athwas Retail. Athwas with confidence. 14 for 1 after 4 overs. That is a good shot. Rises to the occasion but can't beat the man. On his toes, keeps it away. Gentle push away for a single. 15 for 1. Good stop there. As Fielder puts in a diving stop, diving save. Would have been more than one, but look at that. Good stop. Everyone praise that effort. Pat on the back. He deserved that pat on the back. 15 for 1. As we are in over number 5. Powerplay. Tight Powerplay. Nothing going batter's way. That one it keeps low again. Now it's a trend here. Bat first, put runs on the board. In second innings, all of a sudden there is a drastic change. Ball stays low, ball keeps low. It starts to keep low. And it started earlier on now. It's deteriorating further. And it's going from bad to worse. Batters need to find a way. Adjustment is important aspect. It's the important thing. You have to apply, show some application, that determination, commitment. Find some runs. Try to come forward. When you don't have the bounce on offer, you have to find it around that front foot area. This time hit hard, straight down the ground. Chase for Junaid Bashir. Will he get to the ball? He has done well. Again, look at that save. What a fielder. He's an acrobatic fielder in the side. What an athlete. Superb one. A man to watch out from Budgam. He is so quick, and look at that. Shahid Khan just trying to get his head out of the line. But look that. Oh, Shaukat, he was just trying to flee the spot. Trying to save himself earlier on. There was a kind of a mishap, but he was lucky that he got away from that incident, and it was Sajjad Sultan who rammed into that canopy. 17 for 1. Halfway mark in 5th over. This is a 5th over we are in, and it's just 17 on the board. $17 for 1. This is over number 5. We are in. Shahid in his 3rd over. None for 7. His wicket less, but this lad exerting certain amount of pressure, and others are reaping the harvest, like that of Roopmeer. That's a good looking shot again. Ishtiaq Robbie stops the ball and saved 3 runs for his team.
This is good cricket. Brilliant, I must say, from Al Samad. The pack looks okay today. The side looks up to the mark. It's a team effort. All are there to back themselves. When you have a side like this, fielders backing your bowlers, saving runs, saving boundaries, that is gonna up the tempo. That is a quality shot. Needed that one, badly needed. This time he says, enough is enough. He goes over covers for a maximum. Quality shot of the bat of Fazil Rashid. It was width on offer. Yes, there was a width on offer. Scare driven. Scare drive comes into play. It goes aerial onto the rooftop. Much needed 6 for their delight. And that will boost his confidence. That's going to give him something back, which wasn't there, which was lacking and missing. That wasn't in place over the past couple of overs. That cracking shot of that 5th over, the last ball gone for half a dozen, that just helped side to some extent. They're 24 for the loss of 1 wicket. Hinan thrown his wicket away, not learning the lesson. He has got that experience. He has played basic level cricket, and knowing that you can't play away from the body like that. But today he has done that once again and committed a big mistake. Quality shot. Fresho begins with the boundary again. Now Baba joins the party. And he says that if my partner can do, why can't I? I can also join the party. Puts it away. And it goes in no time into the fence. 28 for none. Good start to the fresh over. Junaid Bashir is going to continue at 28 on the board, chasing 213. Heavily caught on the offside, packed offside. Miss shot of them behind scare on the off. Wanted a single, won't get that. He's quickly onto the ball. That's good cricket from Al Samad. Summer is struggling. He's got that burden to share. He's keeping wickets, batted for 40. Oh, that one, that's aerial. Where is this one going? And that is another towering 6. The sixer king comes up with a blistering 6, and it's out of here. And look at that connection. That flown all the way. Much needed one. 34 on the board, and Junaid Bashir is on the receiving end. 34 रन हर बड़ा छक्का तजम्मुल बाबा के बल्ले से जुनैद के विरुद्ध. एक बार फिर हवा में गई है गेंद. उस और खिलाड़ी आ रहे हैं. जब तक फील्डर पहुंचते गेंद उनसे पहले 1-2 कदम जमीन पे जा टकराई, पर एक सिंगल जरूर मिलता हुआ तजम्मुल बाबा और हिनान मलिक को. मलिक और बाबा ये जोड़ी इस समय द रियल सुल्तान समरबुघ के लिए एक साझेदारी सफलतापूर्वक निभाने का प्रयास, आवश्यकता भी है. एक विकेट जरूर गंवाया है शुरुआत में. और ऐसे में अगली गेंद लेकर के 35, 1 रन जरूर मिला. हिनान मलिक सामने और सीधे हाथ में थमा दिया. यहां पारी समाप्त होते हुए और फाजिल रशीद जो कि नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए आए थे और वो भी अपना विकेट गंवा बैठे. और द रियल सुल्तान समरबुघ ने दूसरा विकेट गंवाया. पहले हिनान मलिक और अब फाजिल रशीद. बाबा अभी भी अभिजीत हैं 35 पे दूसरा विकेट. अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में अल समद क्रिकेट क्लब द्वारा इस 16वें मुकाबले में जेके सुपर सीमेंट प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस. और एक और मुकाबला
अंडरलाइट्स दूसरा मुकाबला होगा आज के दिन का और 17वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का। एक तरफ सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब और दूसरी तरफ रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। वो क्रिकेट का बेहतरीन घमासान आप तक जरूर पहुंचेगा। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और उसके अलावा रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से आप एंजॉय कर सकते हैं दिन रात्रि के उस मुकाबले को। पर यहाँ वर्तमान में दूसरा विकेट गंवाया है द रियल सुल्तान समरबुग की टीम ने और देखना होगा कहां तक पहुंच पाएगी टीम 213 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। 35 पे दूसरा विकेट गंवाया है टीम ने। अच्छा मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला, शानदार मुकाबला। और अब जाकर के नंबर नए बल्लेबाज देखना होगा कौन से बल्लेबाज का चयन किया गया है। जसमीत नैन और क्या आज उनके बल्ले से रनों की रेन देखने को मिलेगी। जसमीत नैन, एक पार्टनरशिप यहाँ पर जरूरी बाबा और जसमीत को, क्योंकि दबाव में इस समय टीम द रियल सुल्तान समरबुग 2 विकेट, 2 बड़ी सफलताएं मिल चुकी हैं और 2 बड़े विकेट गंवाए हैं यहाँ पर रियल सुल्तान ने। पहले हिनान मलिक दूसरे विकेट के रूप में फाजिल रशीद और अब नंबर 4 पे जसमीत नैन नए बल्लेबाज। जुनैद बशीर पहला ही ओवर उनका सफल और पहले ही ओवर में सफलता। अगली गेंद लेकर के तैयार जसमीत सामने। हाँ, एक और अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, पढ़ने के बाद सीधी रहती। विकेट कीपर से चूक जरूर हुई पर रन नहीं मिला यहां पर और ऐसे में ओवर की भी समाप्ति। इस प्रकार से एक और ओवर, सफल ओवर जुनैद बशीर का। 35 द रियल सुल्तान समरबुग 2 विकेट के नुकसान पे। Lost the second wicket in form of Fazil. Ball holding up a bit in surface. Junaid produced another beauty against the likes of newcomer Jasmeet Nan, and he was nearly surprised. 35 for 2. Power play done and dusted. Couple of big shots coming that helped their side to some extent. Baba moves to 19 of 19. Strike rate of 100. Nan astonished, looking at the bounce of the surface. Ball keeping low. Looks like Jia Ali is going to bowl now. There is another change in the bowling. Jia will operate from Southern Pavilion and 2 for 35 on the board. The required rate is 12.71 and 0. That is massive. That is enormous. Too much to get from 14 overs, 84 balls. It's just 35 on the board. Tough task. Tough chase on course. Tight game of cricket. Anything can happen. But the batting side need resilience, perseverance. Here is the fresh over. Jelly into the attack. Slower one. And Baba, he's got the problem with these slow ones. He need that pace. He want to bowl at a good pace. Something that's going to rise. These balls where there is enough light, there is space behind the ball, he's going to love, he's going to rock. And when you mix it up with the slower ones, you take pace of the ball, you roll fingers over the ball, that makes it difficult for Baba to pick and understand. Look at that, hit hard, straight down the ground, drilled. He's going to win the race. Junaid Bashir can't cut it off. It's never easy. When Baba hits, it stays a hit. He stays put and puts that one away for 4. 39 on the board. Much needed boundary there for Baba and his team, the real Sultan Sumerbugh. Another silver run back of the hand, but no change this time. He brought about a change into the block hole this time. Jasmeet Nan wanted a single. He wanted that strike back, and it won't be easy to run like ran. You have to maintain yourself in a well manner. 2 for 39. It is over number 7 we are in.
Jolly again. There is an outside edge. And he is delighted. And look at Jolly. Others just trying to assemble around him. But Jolly is pumped up as he walks away. He punches the air in delight. And Tajamal Baba can't believe he's edged to that one. And ball kissed his blade on way to wicket keeper. Good goal from Samar Amin. And Tajamal Baba departs. And take a look again. Jolly bowled that one. Oh, that one finds an edge. Oh, look at the delight. Wow, what a celebration. He's not going to stop. Oh, come on, now just stop there. He's not going to stop. And he's walking. And all smiles in their camp. And it's a delight. It is jubilation. The danger man is gone. Tajamal Baba is walking up the field. You can see that. He's disgusted. He isn't happy at all. As he was just trying to find the rhythm again. Scored 23 of 23 balls with a strike rate of 100. In a hurdle, Al Samad Cricket Club, Baba fought hard when it was a tight situation within the power play. It wasn't easy to answer each and every ball, but he kept that threat away. He batted really well, but didn't last long. In the end, he's caught. It's a wicket for Jolly. Important one, danger man, huge wicket this. And that brings the newcomer, Sajjad Ganai, in at number 5. He comes in, he walks in. Target 213. Look at Jolly again, he's bowling with that side arm action. Slingy one. And gets his man. He's point figure towards captain, telling him, look, you picked me for today's game. I delivered. And I picked up a wicket. You know that the worth of Tajamal Baba's wicket? And Hilal Khalid says, okay buddy, okay, sorry. But today it was a good call to pick you. And he finds his place in playing 11. And he picked up a wicket straight away. Now Roof is just trying to ease up his nerves. Don't fly. Stay grounded. There is no need to feel that kind of a tempo which can backfire at times. You have to contain and maintain yourself at the moment. 39 for 3. We are into the 7th over. The required rate has gone up to 13.05 over. The real Sultan Sumerbugh is in real trouble here. And that is going to test their temperament. It's the real test. Pass it, you're the best. And if you fail, then you have to work on it. You have to do something over the next couple of days. You have to look into it and introspect. This could be tight again. But not a clean stop from Robbie. Ishtiaq Robbie can't pick it up. Unable to bend properly. A single up for grabs. 40 for 3. Risky from Sajjad Ganai. And Jasmeet Nan is going to be on strike. Who was surprised by Roof in the other over, where he was unable to keep that away. It was hard to push that, but here is an opportunity to get off the mark and open your account. The other thing is that Jasmeet has to play his part. He has to come up with a great knock here. One beautiful knock, one brilliant innings that is required by the real Sultan Sumerbugh, and Nan has to find a way. 41 after 7 overs for the loss of 3 wickets as they're chasing a mammoth and a monumental, and it's going to be the highest ever chase in Red Premier League Season 2. If they manage to get there, they require 213 to prevail. इकतालीस पे 3-7 समाप्त 13 ओवर का खेल शेष. ये पहली पारी 16वां मुकाबला JK Super Cement Red Premier League 2025 second edition presented by Athwas Retail. Athwas with the confidence. 41 पे 3-7 समाप्त. 8वें की शुरुआत. ये संघर्षता हमेशा दिखी है और इस संघर्ष में आपका विराम कब अभिमान के तौर पर विराम जनिक होगा ये देखने वाली बात होगी. चलिए 41 पे 3-7 समाप्त. 8वें की शुरुआत. इश्तियाक इलाही को गेंदबाजी के मोर्चे पे पहली गेंद लेकर के इस बार खेला जरूर, गति में परिवर्तन किया और गेंद
वहां पर बीट करती हुई बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में जसमीत नैन और उनके साथ सजाद गना, ये जोड़ी वो दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन बनाया है। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता, काफी लंबा सफर तय करना है। रिक्वायर्ड रन रेट 13.40 तक पहुंच चुका है। 5.72 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। पर जसमीत को एक बेहतर पारी खेलने की आवश्यकता। एक खूबसूरत, एक कमाल का स्ट्रोक है और सीधे स्टैंड्स में 6 और खाते में। इस छक्के के साथ जसमीत के बल्ले से निकलने वाला ये खूबसूरत, जरूर इस जसमीत ने स्ट्रोक के चलते, और ये खूबसूरत जसमीत भैया, ये है संगीत। सुर छेड़े जरूर, वो ताल दिखा स्ट्रोक में। और 6 अर्जित किए 47 पे 3, 7.2 के बाद 8वां ओवर। एक बार फिर उड़ाया है, इस बार गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं। ये कैच तो समर से छूटा जरूर, हालांकि कोशिश जरूर उनकी थी कि पहुंच नहीं पाई गेंद तक, पर 2 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद गिरती हुई रन संख्या में वृद्धि जरूर हुई। जसमीत लगातार 49 पे 3, 7.3 ओवर की गेंदबाजी। जसमीत ने 9 पे 5 गेंदों से सजाद गनाई 1, 7.3, 49 पे 3, 13.12 रिक्वायर्ड रन रेट। जसमीत रॉबी के सामने, फिर ऑन साइड में संभवतः 1 रन और मिल जाएगा। एक और खाते पर 50 पूरे होते, 7.4 में 50 बने हैं। द रियल सुल्तान समरबुघ के 16वें मुकाबले में दूसरी पारी। एक और मुकाबला अंडरलाइट्स दिन रात्रि के मुकाबले में। एक तरफ सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब, दूसरी तरफ रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। एक और संघर्ष आज शाम देखने को मिलेगा। अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, सामने खेलना चाहते थे सीधे बल्ले से, पर वो संपर्क सही समय पे हुआ नहीं। थोड़ा सा आत्मविश्वास संयम रखना होगा, क्योंकि आपके पास ओवर्स काफी पड़े हैं, 12 ओवर आने बाकी, 7 सुरक्षित हैं, विकेट आपके हाथ में। यह एक अच्छी साझेदारी। सजाद गनाई की बात करें, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, क्षमता है बड़ी पारी खेलने की, और साथ में जसमीत नैन में भी वो क्षमता है, तो उस क्षमता का प्रयोग करना होगा इस मुकाबले में। देख लीजिए, बल्ला हवा में घुमा, गेंद नीचे पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। अंतिम गेंद रन आया नहीं। ओवर की समाप्ति 8 समाप्त, 50 पे 3, द रियल सुल्तान समरबुघ। Ishtiaq Elai batted like a champion. Now he's got a ball in his hand. Run over none for 9. Sajad is on 1 and Jasmeet Nan is on to 10 of 6 balls. They're 50 for 3. Partnership is what they require. Now they need to go after each and every ball in one possible manner, as they require 13.58 an over. Three for 50 after 8 overs, 12 overs, 72 balls. The equation isn't easy. Jali has got the ball in his hand again. He's going to be in his second and overall over number 9. Jia is in good spirit at the moment as he got the rid of sixer king Tajammul Baba, who was caught behind and was undone with the beauty of a delivery. There was outward moment. It's 50 for 3 after 8 overs. We're going to be in over number 9 and fresh over is about to start. It's going to be Jia to operate from Southern Pavilion, and on strike is going to be Jasmeet Nan. What can Nan do? Jia goes down the leg side, a bad line directed needed on the other end. He would have been in all sorts of bother. 51 for 3, starts off with a wide down the leg side, a big wide from Jia. As we're into the 9th over, the first ball ended up as a wide. He has to reload and re-bowl that one as he charges back again. Oh, Yorker length delivery there. Yorks him on that occasion and flicked away nicely. Good stop with the man there at Skellig area. What could have been a boundary
And he keeps it down to 2. Good stop there. Just 2 on that occasion. It's 53 for 3 now. As we're into the 9th over. Giali yokes him with that beauty of a delivery. First one can't get it right, but the next one was right on money. As 3 for 53. Current rate 6.49, and they required at the rate of 13.5 to look at the split screen. On one side, bowler is charging in. On the other side, batteries eagerly waiting for the bowler to come. Oh, that's 4. Good shot. Beats the man at mid-wicket. Gets 4 for that. Shahid Khan can't stop the ball as it goes past for a boundary. This time gets hold of that. Pulled nicely by Jasmeet Nan. And this is the need of an hour. This is needed by the 2 batters in the middle. They require more than 13 and over. Find boundaries at will. Find boundaries each over. That will keep your boat sailing. Next one. Once again a pace off. I think that makes Giali a special prospect for his side. He knows how to mix it up with that slangy action. And he's keeping it simple and tight. Producing Yorkers and going with the slower ones. That is the variety he's got. And he's got that beauty. Giali, he's in a second of 1 for 14. And removed one of the dangerous batters of Budgam. The danger man in the valley, Mr. Tajamul Baba, sent packing. It keeps low again. And the bounce isn't there too much for the second innings on offer. In the second innings, it's going from bad to worse all of a sudden. It's decreasing, not increasing. The bounce is going downwards. It's just rolling on the surface. At times we have seen that once again. And batters find it hard to keep it away. It isn't easy to dig it out. Or it will take special character and that eyesight to keep it away. And watch it keenly and observe it first. Then to operate with the bat. Good shot again. Scare on the on. There is Amir lefty. 59 on the board for the loss of 3. They are chasing a mammoth 213. Partnerships needed. 3 of the batters gone back. Nobody could resist. The resilience, perseverance. Someone has to resist here and persist with that character that I will stay till the very last one. That's Ariel. That's Apish. Will he get to the ball? Is he in danger here? Junaid Bashir makes it to the ball. Good catch in the end. And Jasmeet Nan is gone. Second one for Giali in his second over. It's wicket number 4 down. The real Sultan Sumerbugh sinking further here. One more bites the dust. Another one departs. Aerial he goes. Aerial he gone. Oh, look at that one. Good elevation. None the distance. Talking about this lad, the Superman from Budgam. It is Junaid Bashir. None other than Junaid Bashir. He comes to the rescue, gets to the ball, settling underneath it, and takes it with ease. With cool head on his shoulder, showing that composure. Stays compact and takes it in the end. 17 of 10. He batted with a strike rate of 170. 1-6-1-4. Walks off the field. Coming back. And that brings the new man at number 6. It is Nasir Ganai. Some call him Valley of Valley. He's in at number 6 now. Four for 59 after 9 overs. Over number 10 is about to start. Who's going to get the ball for the 10th over? Is it going to be Ishtiaq Robi again? Scored 76 with bat. Now he's got the ball in his hand. Jasmeet Nan kept him little away in that other over. And right now I can see that Muzaffar Tele is back on the field. Whose place he's in at the moment? Which one's place he's going to fit in?
Muzaffar Tele is out on the field. Mustele is there around that fly slip area. Somebody's off the field for a while. So that's why Muzaffar Tele walks out. 4 for 59 after 9 overs. 66 balls. 11 overs. Crucial 11 overs. Nasir Ganai and Sajad Ganai. Two men, the duo in the middle. Both known for hitting big sixes. They are known for some of the quality knocks. One needed here. Oh, he does well. Good stop. Muzaffar Tele cuts it off. Just a single. And singles won't do it for the real Sultan Sumerbugh team. They need some big shots. They need to keep that scoreboard ticking all along. Captain having a word. Captain walks away. Had a chat with bowler there. 14 and over is the asking rate. Shade over that. 60 for 4. Nasir, first ball. Is he in danger? No, he's safe. He's fine. That's 4. One bounce into the backward of square boundary. 64 for 4. As we're into the 10th over. For a while, I thought that's gone aerial. That's in the air. Is he going to be in danger? No way. He's safe. There was no problem at all. And it was a genuine hit. Deliberately done. Pulled to perfection. Half tracker. Easy pickings for Nasir Ganai. Much needed boundary for his delight. Sajad Ganai walks up to him, telling him that you can. You have that power. 4 down. 64 on the board. This time beaten. Gets beaten. He's a bit lucky. Just over the stumps there. And Ishtiaq Robbie is rolling fingers over the ball. Scoring 76 invaluable with the bat. Now he's trying to put in an effort with the ball. He's looking for one here. That will mean Sumerbugh will be under the pump. It's a tricky situation. The fresh pair is in the middle. With huge amount of pressure. This time wraps him on pad. Gets hit on the pad. But he survives. I think it was going down the leg. Good call from Ravi Kumar Choresia. That's the only way that will save the batter. 65 for 4. Ishtiaq Robbie, tall, lanky. He's taller than others in today's game. And he's standing tall. Next one, inside out he goes. And this time it's over backward a point. In no time he races away for 4. Second boundary of the over. Robbie was trying to weave that web around the batter. And Nasir somehow breaks free with that angle blade. And in no time gets 4 for that. With that second boundary of the over, it's 69 on the board. Plus 14 is required. There is no change in required rate. It's all, look at that one. Surprised him again. Beautiful delivery. There wasn't good bounce and offer. It didn't carry. Beaten him. 2 was gone for 18 from Robbie. Halfway mark. Chasing 213. They are 69 for 4. पहला सत्र 10 ओवर का समाप्त. अगले सत्र में 10 ओवर में 60 गेंदों से 144 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. कठिन रास्ते, कठिन परिस्थितियां द रियल सुल्तान समरबुग के लिए. 60 से 144 10 ओवर में 144 14.40. यह आस्किंग रेट यहां से टीम द रियल सुल्तान समरबुग के लिए 16वें मुकाबले को जीतने के लिए अपनी टीम के लिए. JK Super Cement Red Premier League 2025 second edition presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. बनाए मजबूत कश्मीर build strong. JK Super Cement. JK Sports Time ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब और रेड एफएम JK यूट्यूब के माध्यम से प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन पीस एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बुखारा हमदान हुरिकेन्स डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब एंड वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब. धन्यवाद स्पॉन्सर्स, श्रोताओं का धन्यवाद. ड्रिंक्स ब्रेक इसमें चल रहा है. 10 ओवर की गेंदबाजी
ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत। 10 ओवर समाप्त, 69 पे 4, 7 पे सजाद गनाई और नासिर गनाई 4 पे। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता, 69 पे 4, 144 चाहिए, 60 गेंदें बची हैं। इश्तियाक रॉबी ने 2 ओवर 18 रन, 9 का इकॉनमी। बल्ले से कमाल की बेहतरीन पारी 76 रनों की। गेंदबाजी में 2 ओवर में 18 विकेट अभी तक उन्हें मिला नहीं है, कोशिश जरूर होगी। हर कुछ बातचीत मुजदली और विकेट कीपर आदिल गुलडान के साथ। 69 पे 4, 14.40 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं यहां से। सजाद 7 पे सामने, नासिर गनई 4 पे 3 गेंदों से। और एक और मुकाबला, वो 17वां मुकाबला होगा अंडरलाइट्स रॉयल गुडविल का मुकाबला सोपोर स्टैलियंस के साथ। एक संघर्ष, एक कांटे की टक्कर का मुकाबला आज की शाम अपने श्रोताओं के नाम। 60 गेंदों से 144 चाहिए। और किस गेंदबाज का इस्तेमाल, सोच विचार मंत्रा चलते हुए अंततः कि जिया अली से गेंदबाजी करवाएंगे, ये देखना होगा। और जिया अली ने इससे पूर्व अच्छी गेंदबाजी की है और 2 विकेट संभवतः उन्होंने प्राप्त किया है। 4 अभी तक गंवाए हैं द रियल सुल्तान समरबुग ने। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर इस प्रतियोगिता का नेतृत्व करता हुआ यह मैदान जहां पर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 11वें की शुरुआत, जिया अली 2 ओवर 15 रन, 2 विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, 7.50 का इकॉनमी। तीसरे ओवर की गेंदबाजी अपने कोटे में और पारी का 11वां ओवर लेकर के अल समद क्रिकेट क्लब की ओर से द रियल सुल्तान समरबुग के लिए 69 पे 4। नॉर्दर्न पवेलियन एंड से नेवर की शुरुआत। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पहला ओवर। लेग स्टंप से काफी बार विकेट कीपर से भी हल्की सी चूक जरूर हुई, पर वाइड का इशारा अंपायर बलविंद्र कुमार सोनी का। 1 रन और खाते में। 69 से बढ़कर 70 पे 4। तो काफी लंबा सफर तय करना है, 143 बनाने हैं यहां से। आसान रहने वाला यह सफर है नहीं, पर क्रिकेट बढ़ाना निश्चिंताओं का खेल और बेहतरीन शानदार आकर्षक क्रिकेट खेलनी है यहां से, तो फिर जाकर के इस मुकाबले को अपने नाम किया जा सकता है द रियल सुल्तान समरबुग द्वारा। इस बार बड़ा स्ट्रोक, खूबसूरती के साथ, और गेंद स्टैंड्स में। एक और छक्का, नासिर गनई के बल्ले से निकलने वाला यह छक्का। इससे पूर्व एक चौका भी लगा चुके हैं, 10 पर पहुंच गए वो उनका व्यक्तिगत योग। जिया अली के विरुद्ध खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन शॉट नासिर गनई के बल्ले से, और इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि। यह रन संख्या 11वें ओवर में 76 तक पहुंच चुकी है। नासिर गनई में क्षमता है, थोड़ा गेंद की लाइन में आकर के ठीक गेंद के पीछे आए और खूबसूरती के साथ क्लाइंब के दम पे 6 वहां पर अर्जित किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 76 पे 4, 137 चाहिए 59 गेंदों से। 10 पे 4 गेंदों से नासिर गनई। जिया अली एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। एक और चौका, पिछली गेंद पर 6 और इस अगली गेंद पर, इस गेंद पर 4। 10 रन और पहली गेंद वाइड। 11 रन आ चुके हैं 2 गेंदों से इस ओवर में जिया अली के। दबाव जिया अली पे, नीचे रही थी गेंद जरूर पड़ने के बाद, उतना ज्यादा उछाल था नहीं, पर पहुंचे जरूर खूबसूरती के साथ। नासिर गनई अच्छी बल्लेबाजी, पर इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करना जरूरी अवश्य। 14 पे और पैड पे टकराई है, पर लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद। रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। लेग बाई का इशारा, 1 रन और खाते में। रन संख्या 81 11वें ओवर में। 132 चाहिए 57 गेंदों से। 13.89 जिस समय रिक्वायर्ड रन टीम द रियल सुल्तान समरबुग के लिए। सामने सीधे बल्ले से लेग की ओर खेले, एक सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के साथ रन संख्या 82। 1-1 रन से कुछ छक्के चौके। इस ओवर में वाइड 7, 11, 12 और 13 रन आ चुके हैं। 2.4 ओवर में 27, 2 विकेट प्राप्त किए हैं जिया अली ने। अच्छा ओवर अभी तक घटा है बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, क्योंकि 13 रन आ चुके हैं 4 गेंदों से। 82 पे 4। जिया अली सामने, नासिर गनई ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ, पर पीछे फील्डर ये जुनैद बशीर है। उसी स्थान पे एक और कैच, जहां इससे पूर्व जसमीत नैन का कैच लपका था, उसी क्षेत्र में नासिर गनई का कैच लपका और नासिर की पारी हो गई समाप्त। 14 बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, 5वां विकेट गंवाया यहां द रियल सुल्तान समरबुग की टीम ने। ये देख लीजिए,
और जी हाँ बिल्कुल स्लोवर वन का इस्तेमाल ज़रूर किया था, बैक ऑफ द हैंड स्लोवर वन, और उसको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया। हालांकि स्ट्रोक खेला ज़रूर था, उछाल ज़रूर थी, दूरी नहीं दे पाए। पर ये जुनैद की बात करें, बहुत ही बेहतरीन फील्डर, शानदार खिलाड़ी है, और दूसरा कैच उसी स्थान पे जा लपका है। 131 चाहिए 55 गेंदों से, 82 पे 5, 10.5 के बाद सजाद गनई के साथ नए बल्लेबाज आमिर सोफी नंबर 7 पे। Sophie comes at number 7. Good catch again. Something special from Jali. Nasir batted with a strike rate of 200, scoring 14 of 7 balls. You got to give full marks to the bowler, who took pace off the ball. Slurver one, back of the end slurver. And there was Junaid Bashir. He's not going to drop many. You're going to rarely see anything going down off his hands. And he took that one with ease again. 1-3-1 needed from 55 bowlers. The equation is getting tough and tight in the middle. As Jiali is in his third over, he's picked up 3 out of 5, 3 falling into his kitty. Amir Sofi, he will take. One 3-1 needed from 55 balls. And this over we have seen a wide, 6-4, leg by and a wide. Then a wicket coming up the 5th ball. You have to give full marks to the bowler, the way he mixed it up nicely here. He has kept the batter on his toes and removed him in a wonderful manner there. Nasir barely can't control his nerves there. He decided to go at it. Amir Sofi with the very first ball. That is a fine shot. That is a flick round the corner. He is going to get 4 more runs here. That is a superb boundary, and he opened his account with that flick shot. Gorgeous and glorious. Lovely touch. Jiali conceded boundary of the final ball. Take a look again. Beautiful shot. Elegance is there. Class is there. Wristy it is. And with that boundary, there is addition to the tally. There is addition to the score. And it's now 1-7 needed from 54 balls. 86 for the loss of 5. The required rate is still going upwards. It is in excess of 14. 14.11 and over is the asking rate. Requiring 14 more than 14 and over won't be easy. With 5 wickets down, hop their team back to hut. Sajjad and Amir Sofi need to do undoable with the bat. Something that is unbelievable. The duo need to put on a show. Ishtiaq Ilahi has got the ball again in his hand. 2 overs, none for 18. In search of one here. Others picking up wickets. Robbie is yet to end that drought. That's Ariel. Little uppish, but in the gap. No problem there. Just a single. 87 on the board for the loss of 5. We're into the 12th over. 126 runs behind from 53 balls. This is JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. As we are in 12th over, Ishtiaq Ilahi is bowling that 13th over of innings. Driven straight. Another quality shot of the bat of Amir Sofi. He's a natural grafter. Classy. And look at that. Nice shot towards mid-on. That was driven handsomely. And the shots Amir possess, you would love to be part of that. And you're going to enjoy these vibes when Amir is striking. It's 1-4 behind. This time early into the shot. Little early. He closes the bat face. Lucky gets away with that one in the end. Singles won't do it. But one thing is going to work. That will keep that little pressure away. If they keep going with 1s and 2s. And they need to finish somewhere close to that mark of 230. That's a good shot. Driven straight. Ariel and Apish beyond the boundary line. And the cameraman there, he has to take care of himself. As he is okay and safe there. He's fine in the end. Another good shot. Not trying to hit hard. Just timing the ball to perfection. Through the line. Gorgeous touch. Wonderful timing. Brilliant shot.
6 more. And it landed beyond the boundary line. So runs are coming. Runs should come here. They need thick and fast. They need in bundles. Next one, clipped away, wanted single and is denied. Ishtiaq Robi this over 6 to 8, 9, 10 of it. He has gone for 10. And this is his third over. Overall, he conceded 28 and is wicketless. In search of a breakthrough, in search of a wicket here. He's trying to chip in with one at least. He has to walk away. That is called as something is better than nothing. Will he be able to do so? This time comes down the track. Ajeshwan is going to fly and won't get to the ball. Ball is quick and cheeky on its way to the boundary. And with that, 4 over comes to an end. Sajjad survives. He gets 4 more runs. Fortune favors the brave. And take a look again. This is an example, the perfect one which fits it, as he decided to take him on without any fear. And gets 4 for that. He gets good result in the end. It's 100 up after 12 overs. They're 113 behind from 8 overs. Required rate is still around 14.13. It is just hanging around that. This is the dugout. There is a huge amount of pressure. Few of the faces lost that smile. They can only recover it. It can only be back if someone comes up with a knock of 60, 70 from 35, 20 balls. 20, 25 ball, 50, 60. That will make it an interesting game of cricket, and that will make it one heck of a contest. Are we in for that kind of a game again? It's 100, but it took 12 overs and they lost 5 of the batters in making those runs, and it took them 12 overs at the cost of 5 wickets. 113 behind, 48 balls. Little uppish, but in the gap, wide of the fielder. It does well in the end. And good stat maintained by Sheikh Nazir, telling me that it took just 7.4 ballers to reach 100. Al Samad, and they brought 100 inside just 7.4 balls. That means in the 8th over, there were 100 on the board. In response, it's over number 13. And Real Sultan are 101 for the loss of 5. That one, there is a man at long off. Looks in danger. And fielder makes no mistake. Holds on to the ball. And Sajjad Sultan is the latest one to go. It is Jia Ali there. He has put on sunglasses. It was tough to understand who's this there. And it is Jia Ali in the end who takes that one. Extension of arms, but not to perfection. Straight into the hands. So wicket number 6 down. 1 more goes. And bowling side finds another success here. That brings the left-hander in at number 8. And the tight situation continues in the middle. Tough situation again. Just 14. The 2 batters contributing 14 each. One is Nasir. Now it is Sajjad Ganai. It's 14 apiece. And the number of balls, simply apiece. 7 balls each. Number of runs, 14 each. बड़े लक्ष्य का दबाव ज़रूर दिखा है मनवर, क्योंकि 213 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए, तो ऐसे में विकेट लगातार अंतराल के बाद, और वो जो आस्किंग रेट है उसका दबाव भी दिखा. इसमें 14.61 तक पहुंच चुका है, उसको भी रिकवर करना है, विकेट सुरक्षित रखने हैं. शुरुआत में अपने विकेट गंवाए, तो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति ज़रूर बनी हुई है इस समय टीम द रियल सुल्तान समरबुक पे, और उस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास, आपको थोड़ा सा आक्रामक होना पड़ेगा, पर उस चक्कर में आप अपना विकेट भी गंवा सकते हैं. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक संकट की स्थिति जरूर द रियल सुल्तान समरबुक के लिए, पर इस संकट से उबरने के लिए आपको जुझारू रूप से बल्लेबाजी करनी है. आपको एक छोर से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करनी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करनी है. और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, एक तेज तरार पारी, वो 20-25 गेंदों से आपको 40-50 रन जोड़ने हैं, फिर जा करके वो रोमांचक स्थिति आ सकती है. नहीं तो 4 विकेट सुरक्षित हैं, 112, वो मात्र 46 गेंदों से आसान है नहीं, विकेट उतने आपके पास है नहीं. नए बल्लेबाज विजन पंचल तिरछे बल्ले के साथ उसको दिशा दे दी, पीछे फील्डर हैं, सिंगल ज़रूर वहाँ पर क्या मिलेगा अथवा नहीं ये देखना होगा. 101 पे 6, 12.2 ओवर की गेंदबाजी, 1 रन ज़रूर मिला.
102 12.3, आमिर सोफी 8, विजन पांचल 1। और अब आमिर सोफी होंगे सामने। जुनैद बशीर का ये दूसरा ओवर, 1.3 ओवर 13 रन 2 विकेट, और जी अली के 3 विकेट और 1 विकेट अन्य गेंदबाज को। बेहतर गेंदबाजी हुई है इस बार हल्के हाथों के साथ। फाइन लेग की ओर खेले, पीछे खिलाड़ी तैनात हैं और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदली। एक सिंगल और खाते में, और इस ओवर में अभी तक 3 सिंगल 1 विकेट, 4 गेंदों से 3 रन आए और 7वें विकेट भी जुनैद बशीर को मिला। 44 गेंदें, 110 रनों की आवश्यकता, 103 6 विकेट पे। द रियल सुल्तान समरबुग, ये 16वां मुकाबला जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास। अथवास विद कॉन्फिडेंस, पर यहां सीधे खिलाड़ी को हाथ में थमा दिया और पारी हो गई समाप्त विजन पांचल के। जुनैद बशीर को ओवर में मिलने वाली दूसरी और कुल मिलाकर तीसरी सफलता। 1.5 ओवर 14 रन 3 विकेट और 103 पे 7। 13वें ओवर में पूरी तरह से दबाव इस समय टीम द रियल सुल्तान समरबुग पे। और हमने जिक्र पहले भी किया था कि आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है, रनगति को उछाल देने की आवश्यकता है, बड़े प्रहार करने, उस चक्कर में आप विकेट भी गंवा सकते हैं। और यहाँ सीधे वहां पर खिलाड़ी के पास लॉन्गों पे उन्होंने कोई गलती नहीं की, कैच लपका, पारी हो गई समाप्त। एक और विकेट मिलता हुआ जुनैद बशीर को। आज 2 कैच भी उन्होंने शानदार लपके, 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, एक छक्का उन्होंने लगाया था, बल्लेबाजी में मात्र 6 रनों का योगदान दिया। कट जी अली, बोल्ड जुनैद बशीर, 1 रन बनाया 2 गेंदों से। यहाँ विजन पांचल ने 103 पे 7, 43 गेंदों से 110 की आवश्यकता। सिंगल विकेट, सिंगल विकेट। हाँ, क्या बेहतरीन ये आंकड़े हैं इस ओवर में। पहली गेंद पर सिंगल, फिर विकेट, फिर 2 सिंगल, फिर विकेट, और अब अंतिम गेंद पर क्या सिंगल आएगा तो 1 विकेट 1 विकेट 1। और ये दिलचस्प आंकड़ा रहेगा। पर अल समद क्रिकेट क्लब की टीम अपने आखिरी लीग मुकाबले में, पूल बी से वो अपना आखिरी लीग मुकाबला खेल रहे। इससे पूर्व उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं और 2 में हार, 1 में जीत, और ये निश्चित तौर पे दूसरी जीत हो गई। और वहीं पे समरबुग की अगर बात करें तो इससे पूर्व उन्होंने 2 मुकाबले खेले, 1 में जीत 1 में हार। तीसरा मुकाबला है तो ये दूसरी हार होगी और अगला मुकाबला करो या मरो की स्थिति होगी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला होगा उनका। साजिद डार नए बल्लेबाज, और पहले ही डाउन द ट्रैक निकले, जरूर उठाया गेंद को और गेंद सीमा रेखा से बाहर। और यहाँ पे देखना होगा 4 अथवा 6 तेज तरार स्ट्रोक था। अभी भी रन संख्या में वृद्धि, क्या चौका अथवा छक्का, या फिर अंतिम गेंद पर सिंगल आया, ये देखना होगा। हालांकि 103 पे 7, 12.5 के बाद ये आखिरी गेंद थी और इस प्रकार से ओवर की भी समाप्ति। 13 ओवर तो समाप्त हो चुके हैं, 7 ओवर का खेल, 42 गेंदें बची हैं। अल समद क्रिकेट क्लब की टीम ने पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है बल्लेबाजों पर और उनका पल्ला भी भारी है। देखना होगा ये 6 अथवा चौका, असंभवतः 6 का निर्णय आया है। जी हाँ, तो 6 रन खाते में जुड़े। अंतिम गेंद पर छक्का, ओवर की हो गई समाप्ति। 13 समाप्ति, 109 पे 7, 42 गेंदों से 104 रनों की आवश्यकता मैच जीतने की। They need 104 more runs. Just 7 overs at their disposal now. The number of resources, just 3 in hand. Number of overs, they still have 42 balls. But the number of wickets, that is going to be the concern. The wickets column is another important aspect of the game. You need to keep wickets intact. They don't have too much. Works it away onto the onside. Good shot from Amir Sofi. Sofi moves into the double figures. 103 behind from 41 balls. Now there are the bigger shades on one side because sun is heading towards west. 103 from 41. Gone flat. There is production, there is field. Will just be one. He pulled it away. Muzaffar Tele does mop up. One by one, singles are coming, one after another. Singles won't help. Little uppish, but in the gap again. Good shot. Nelson on the board now.
It should be more than that. 112 now for the loss of 7. It's taking little time to update. Still 100 needed from 39 balls. Sophie has got Sajadar. And look what's going on. And nothing is going your way. These things are going to be part of it. Be optimistic and look at that one. It was hit me delivery and Sajad isn't going to miss these ones. But on that occasion he can't do very much with that one. Should have been somewhere in the stands. He missed time at a low full toss. This time gets underneath that one. He crouched low a bit on that occasion. 100 away from 37 balls. Roopmeer in his third 2.5 is gone for 13 and picked up a wicket. Roopmeer is normally a difficult customer to face because he's got all the variations. He can reverse the ball, he can swing it, he can lower the pace, he can take that pace up. They need in double figures now. 99 from 36 with just 3 wickets in hand. The second game coming your way. For today it's going to be Sopor Stallions taking on Royal Goodwill. That promises to be a big game of cricket. Royalists, they already qualified. They have 6 points from 3 games in the tournament. They're having 6 points, invaluable points, and winning all the 3 games one-handedly or the single-handedly, and putting huge amount of pressure on different teams. And today it's going to be the 4th one, and tonight that's going to be an interesting game of cricket because Parvez Rasool on one end, on the other end it's going to be Ishtiyaq Rasool. Apish, and in the gap, wide of the man. So nice, covered that one. Fantastic shot, 95 away. Brilliant forecoming. That boundary comes off the bat of Amir Sophie. Look at that, open at the bat face. Delighted, and so much for his fans and to their delight. 95 behind. This time he took pace off. He was shaping for yet another inside out shot. He was trying to open up a bit. Played basic level cricket. Now he's playing local cricket here. He has been part of local cricket over the past couple of years. Quite successful. 95 still required. Direct hit needed, and Sajid would have been on his way. Just a direct hit needed. It would have been curtains down. 94 away from 33 balls. Amir Sophie moves to 17 of 11. Sajid is now gearing up a bit. Sajid is known for some of the cracking shots, big shots. He can hit the ball deep, long, wide. Right now there is huge amount of pressure. He's unable to break free. Now he has changed the bat. Will it work? The change of bat for striker. 119 for 7. This time doesn't connect again. Stays touch low yet again. Had that connected, the bat would have been somewhere around that long on area. He was eyeing that onside boundary. Gets beaten badly. Wicketkeeper almost making mess of that. This time shaping for that sweep shot, and is given out. LBW. Wicket number 8 down. Junaid Bashir strikes again. He gets hit on pad below the knee roll, inside the line. Against the spinner, shaping for that sweep shot. It's never easy. Look, he's trying to sweep the ball and gets hit right in front. Going on to hit middle and leg. So it's 8. So this is 8th one down. It's 4th one for Junaid Bashir from Budgam. Well, I can understand that. 17 from 12 balls with a strike rate of 141. 2 fours coming and unable to hit 6 in today's inning. And overall, the Real Sultan Sumerbugh are under the pump
31 गेंदों से 93, 8 विकेट गंवाए हैं। 2 विकेट सुरक्षित। उमर आलम अब नंबर 10 पे बल्लेबाजी के लिए। साजिद डार 8 रन बनाए 5 गेंदों से 18 यहाँ रिक्वायर्ड रन रेट, और संभवतः कहना चाहिए कि पहुंच से बाहर। और आखिरी औपचारिकताएं यहाँ पे इस्तेमाल करें शब्द शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि विकेट आपके पास ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। यह 17वां मुकाबला जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकेंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 120 पे 8, 14.5 अंतिम गेंद का आना बाकी। 93 रन दूर है जीत से। 31 गेंदें बची हैं मात्र और 2 विकेट सुरक्षित। 120 पे 8 उमर आलम के लिए जुनैद बशीर। और जुनैद की गेंदबाजी विश्लेषण देख लीजिए। 2.5 ओवर 25 रन, 4 विकेट, बल्ले से 6 रन। कमाल की गेंदबाजी। 3 ओवर में 25 और 4 विकेट। बहुत ही बेहतरीन। यह अंदाज भी नया। 31 से 93 जीत के लिए उमर आलम और साजिद डार की जोड़ी बीच मैदान में। द रियल सुल्तान समरबुग, यह तीसरा मुकाबला पूल बी में उनका, और 16वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का। एक और मुकाबला और डे नाइट मुकाबला दिन रात्रि के, उस मुकाबले में आपके साथ जुड़ेंगे 6:30 बजे। एक तरफ इश्तियाक रसूल, दूसरी तरफ परवेज रसूल। सोपोर स्टैलियंस का मुकाबला रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के साथ। वो क्रिकेट की भिड़ंत होगी। 30 गेंदों से 93, 5 ओवर में 93 रन बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए। 15 के बाद 120 पे 8। वो अंतर जरूर दिखा है कि पहली पारी की अगर हम बात करें तो 15 ओवर में अल समद क्रिकेट क्लब ने 137 बनाए थे, और अगले 5 ओवर में अगर हम जिक्र करें 63 और 13, 75 रन बनाए थे अगले 5 ओवर में। तो वो अंतर जरूर दिखा है इस बार। बड़ा स्ट्रोक, हवा में गेंद, उस ओर फील्डर, और ये सीधा कैच थमा दिया। और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन। साजिद डार की पारी समाप्त। 6 गेंदों से बनाए 8, 15.1, 120 पे 9वां विकेट गंवाया है यहाँ द रियल सुल्तान समरबुग की टीम ने। और निश्चित तौर पे पूरी तरह से आज उनकी पारी लड़खड़ाती हुई। आखिरी जोड़ी होगी अब बीच मैदान में, और संभवतः यशजीत आएंगे अब अंतिम बल्लेबाज के रूप में। नासिर गनई ने संभवतः यह कैच लपका, और साजिद डार की पारी होगी समाप्त। 9वां विकेट गंवाया द रियल सुल्तान समरबुग ने। 120 पे 9, 15.1 के बाद 93 चाहिए। 29 गेंदों से अंतिम जोड़ी यशजीत और उमर आलम बीच मैदान में। द रियल सुल्तान समरबुग के लिए 16वें मुकाबले में जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। पर उत्साहवर्धित चेहरे, हर्षोल्लास का वातावरण, वो हल्की मुस्कान चेहरों पर क्यों ना हो, क्योंकि अल समद क्रिकेट क्लब की टीम दूसरी जीत अर्जित करने जा रही है और मात्र 1 विकेट दूर। और वहीं पे द रियल सुल्तान समरबुग 93 रन दूर। तो आखिरी औपचारिकताएं। और आपको एक बार फिर याद दिलाता चलो, 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ना न भूलिएगा। एक और बड़ा मुकाबला, एक संघर्ष, एक कांटे की टक्कर। एक तरफ परवेज रसूल, दूसरी तरफ आसिफ रसूल, ऐसा कीजिएगा, दूसरी तरफ इश्तियाक रसूल। एक तरफ रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब, दूसरी तरफ सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब। वो भिड़ंत होगी, वो गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष देखा जाएगा। यशजीत के लिए ये गेंद अतिरिक्त उछाल था, तिरछाड़े बल्ले के साथ टैप किया, हल्के हाथों के साथ पर फील्डर तैनात। शाहिद खान का इस्तेमाल। 3.2 ओवर, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी डॉट। आखिरी ओवर अपने कोटे को, और मात्र 14 रन दिए हैं शाहिद खान ने। 93 रन चाहिए 28 गेंदों से। 120 पे 9, 15.2 के बाद। साउदर्न पवेलियन लैंड से शाहिद खान गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर तिरछे बल्ले के साथ उसको गाइड किया, 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। सिंगल मिल जाएगा। 121 पे 9, और अब उमर आलम होंगे सामने। और अब रनों और हार के बीच जो अंतर है, जीत और हार के बीच जो अंतर है रनों का, उसको कम करने का प्रयास यहां पर जरूर किया जाएगा। तो क्या उसमें सफलता मिल पाएगी, क्योंकि 27 मात्र गेंदें बची हैं, 92 रनों की आवश्यकता। द रियल सुल्तान समरबुग को 20.44 ये रिक्वायर्ड रन रेट, 7.81 करंट रन रेट।
ऑन साइड में एक सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए यशजीत और उमर आलम, और उमर आलम का खाता भी खुला 2 गेंदों से 1, यशजीत 2 गेंदों से 1। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा, दोनों बल्लेबाजों ने 2-2 गेंदें खेली हैं, 1-1 रन बनाया है। 122 पे 9, 15.4 के बाद 91, 26 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए पर अल समद की टीम अब बिल्कुल जीत की कगार पे, मात्र 1 विकेट दूर। 1 रन जरूर मिल जाएगा। पीछे खिलाड़ी हैं मुजतेली, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया पर सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे। 1, 2, 3 पे 9, 123 पे 9। 25 गेंदों से 90 रनों की आवश्यकता। 3.5 ओवर, मात्र 17 रन, 1 विकेट। गेंदबाजी विश्लेषण शाहिद खान का। इस ओवर में उन्होंने मात्र 3 सिंगल खर्चे, विकेट भी प्राप्त किया है 5 गेंदों से। अनुशासन देखा, वो पैनापन देखा, किफायती कसी हुई गेंदबाजी। शाहिद खान का यह स्पेल बहुत बढ़िया रहा, हल्के हाथों के साथ खेले जरूर, रन के लिए दौड़ पड़े थे, थ्रो किया ओवर थ्रो के रूप में, अब जाकर के ये रन पूरा कर रहे हैं। 1 रन और अंतिम गेंद पर रन, ओवर समाप्त, 16 समाप्त, 124 पे 9, 24 गेंदे, 89 रनों की आवश्यकता। Keeps that one away top side. Directed needed, but there is a big space. And look at that. On the other side, that was a bit close. And no problem at all in the end. It's 1-2 for the loss of 9. 89 behind. 89 needed. From 24 balls. Asking rate has gone up to 22.25. Looks impossible. Who will bring them back into this one? I don't think it's possible. No, it's impossible. It's all over to me. Just formalities remaining in today's game. As these two batters are holding them together by the thinnest of the threads. To me, they are 88 behind from 23 balls. Here is the next one from Ishtiaq Robi. Good shot there. Keeps it away to wide of mid-on. Does well. He brought his bat right in front, presented the bat face. 126 on the board. Ishtiaq Robi has gone for 34. He's wicketless, in search of a wicket here. And that will wrap it up. Umar Alam gets beaten. Just past an edge there. Umar Alam playing little inside the line of the ball. And ball moving little bit outwards. Robbie is in search. He wants one here badly. In the meantime, he goes away from us again. That's a good shot behind the bowler. Back past the bowler, down towards long on area. Fielder does well. He comes across and settles in with a return. 85 needed from 19. Just 1 wicket away. Who's going to provide that? Robbie trying to target Yashjeet Paris. But Yashjeet makes it clear. He hits it away. 128 for 9 now. 85 from 19. Last ball of over number 17 is coming up. 213 proved to be enough. That one, Ariel and Apish. Will he be caught at long on? He is. So that's it. A wicket for Robbie in the end. Finally, a wicket to celebrate. And that marks the completion of this game. They prevail by 84 runs. And it is a big defeat in terms of runs. Al Samad won by 84. It's an 84 run defeat conceded by the real Sultan Sumerbugh. We shall be back with match number 2. From this game, it's Al Samad who edged past, who prevail in the end. That's it we have for you. Assalamu alaikum and fi amanillah.